Okay, so good morning everyone. Welcome to the class. Welcome to Rayacademy IAS. I hope you are preparing well for the exam. जो रामर October 12 रे हबार अछि OAS Prelims. So say regarding हमें किछटा topics और किछटा questions as a discussion करिबा from the government schemes. Okay. So we'll try to cover maximum questions as much as possible today, and there is also a part 2 that will be tomorrow. So let us start. With reference to the Agnipath scheme, consider the following statements. So Agnipath scheme related tamara kichita statement it was introduced in 2022 and it is also called as the tour of duty scheme. Candidates between the age of 18 to 23 years are eligible for enrolling in the Agnipath scheme. Third statement hochi only 50% of the recruits from a batch are retained for a regular service of 15 years. Hala, so ए तीनटा statement भितरु केतेटा statement हमरो ठीक अछि. So if we see the first statement, it was introduced in 2022. This is right. Candidates between the age of 18 to 23 years are eligible for enrolling. So that is not right basically. Okay, so first statement ठीक अछि कि हमरो it was introduced in 2022 tour of duty scheme भी कुहा होछि, but एट जो age limit लिखा है ना 18 to 23, that is not right. So age limit हमरो एठी 17.5 to 21 years जही तंगरो age limit रही छी हैला. आउ थर्ड स्टेटमेंट तमरो कहउछन कि 50% of the recruits, so not 50%, rather 4 वर्ष पे तांको रिक्रूट करा जिवो. 4 वर्ष पर 25% को ही तुमको फर्दर 15 इयर्स पे रेगुलर सर्विस प्रोवाइड करा जिवो हैला. तो जनरली अग्निवीर जो हमें कहउछन अग्निवीर रिक्रूटमेंट, तो अग्निवीर मान को रिक्रूट करा जिवो फॉर 4 इयर्स एंड 4 इयर रो कंप्लीशन परे सेही भितरो 25% को तमरो 15 इयर रो सर्विस जे रिक्रूट करा हैला. सो स्टेटमेंट 2 हमरो भूल गेला, स्टेटमेंट 3 भूल गेला. सो दैट मींस आंसर इज ओनली 1. ओके, consider the following facts. ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन मेघदूत. सो को ऑपरेशन टा कहा सहित रिलेटेड हैला. ऑपरेशन ब्लू स्टार इज रिलेटेड टू गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स. माने ए तीनटा पैर भितर हमको कोटा कोटा ठीक सेटा बाहर करे रछि. देन हमको टी यूपीएससी टाइप रो क्वेश्चन पचारि जे कि नन ऑफ द पैर कि ए भितर गोटे ही पैर ठीक कि दीटा ही पैर ठीक. आई एम गुड किशोर, हाउ आर यू, थैंक यू हैला. गोटे ही पैर ठीक ना दीटा पैर ठीक ना तीनटा पैर ठीक. सो जदि हम देखिबा ऑपरेशन ब्लू स्टार, जानिथिबो ऑपरेशन ब्लू स्टार कोन? इंदिरा गांधी को टाइम रे हितिला ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो थरे कि गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स रे जो मिलिटेंट्स अछंती तांको बाहर करियार उद्यम करा जायतिला ऑपरेशन ब्लू स्टार रे. एंड से ऑपरेशन ब्लू स्टार पाई ही इंदिरा गांधी को डेथ भी हेतिला हैला, राइट. सिमिलरली ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा हमरो पोखरन टेस्ट पे, पोखरन रो 1 ना पोखरन रो 2 टेस्ट पे, पोखरन 1 टेस्ट रो कोड नेम थिला तमरो स्माइलिंग बुद्धा. पोखरन 2 रो कोड नेम कोन थिला कहि परिबो? पोखरन 1 हमरो हेतिला 1974 रे, तार कोड नेम दिया जायतिला ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा. पोखरन 2 हमरो हेतिला केबे आ तार कोड नेम के कोन थिला? पोखरन 2 केबे हेतिला आ तार कोड नेम कोन थिला? वो 1988 रे हितिला हैला. आ तार कोड नेम थिला ऑपरेशन शक्ति, राइट. सो पोखरन 1 पोखरन राजस्थान रे फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ इंडिया हमरो कंडक्ट हेतिला, तारो कोड नेम थिला स्माइलिंग बुद्धा. ऑपरेशन मेघदूत वाज रिलेटेड टू सियाचिन ग्लेशियर. सो सियाचिन ग्लेशियर रे किछि पाकिस्तानी माने एक्सपीडिट करूथले, तो ताको रोकिया पे हमरो हेतिला ऑपरेशन
मेघदूत कौन पे ना दिया गला बिकॉज से मान को लिफ्ट करगल हमरो इंडियन आर्मी रे जो हमरो इंडियन लोक बनै थिले इंडियन आर्मी थिला तांको लिफ्ट करा गला बिकॉज साइचुन इट इज एट ए हाइट माने हाइट गोटे ग्रेटर अल्टीट्यूड रे हमरो साइचुन ग्लेशियर एग्जिस्ट करे राइट सो सेठी से मान को लिफ्ट करा गला बाय द हेल्प ऑफ एयरक्राफ्ट सेठी पे आर ना हला ऑपरेशन मेघदूत ओके कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट the heir of the Anthropocene initiative. So what do you understand by heir of the Anthropocene initiative? It is a global project that aims to document air pollution levels using traditional photography techniques. हला ट्रेडिशनल फोटोग्राफी टेक्निक यूज करिकी आमे एयर पोल्यूशन रो लेवल टाकू डॉक्यूमेंट करिबा एंड इट इज ए ग्लोबल प्रोजेक्ट इज इट राइट सेकंड स्टेटमेंट कहूची इट एम्प्लॉयज लाइट पेंटिंग टेक्निक्स एंड एयर क्वालिटी सेंसर्स टू विजुअलाइज पोल्यूशन लेवल्स सो बेसिकली ए जो कहि दोची मु एयर ऑफ द एंथ्रोपोसेन कोन हला कि बेसिकली एटा गोटे फोटोग्राफी जरिया रे आमे शो करिबा थ्रू द फोटोग्राफ्स the artists have tried to showcase कि केते air pollution हमें देखी पारुଛୁ because air pollution is not visible तो इनविजिबल टाको विजिबल फॉर्म रे आनिया पे गोटे फोटोग्राफ क्रिएट करा जिवो से फोटोग्राफ रे तमरो देखा जिवो कि ए पर्टिकुलर स्पेस रे एयर पोल्यूशन रहूची हला सेटा केमिति देखा जिवो फोटोग्राफ रे केमिति से डिटेक्ट करिवो बाय यूजिंग दिस क्वालिटी सेंसर हला एलईडी लाइट यूज करा जिवो सेंसर यूज करा जिवो ए सब यूज कराई कि डिटेक्ट करा जिवो एयर पोल्यूशन हमरो कोठी कोठी अछि एंड सेटा हमरो फोटोग्राफ रे भी देखा जिवो हैला सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो कहूची कि ट्रेडिशनल फोटोग्राफी दैट इज नॉट राइट बिकॉज आमे देखु छु ट्रेडिशनल फोटोग्राफी तो यूज करा होनी सेंसर यूज करा होची एलईडी लाइट्स यूज करा होची सो ट्रेडिशनल फोटोग्राफी यूज करा होनी बाकी इट इज अ प्रोजेक्ट दैट एम्स टू डॉक्यूमेंट एयर पोल्यूशन लेवल एतिकी पर्यंत एटा ठीक अछि बट ट्रेडिशनल यूज न करा हेगी एलईडी लाइट्स क्वालिटी सेंसर ए सब यूज करा होची थर्ड स्टेटमेंट कहूची इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन सेवरल countries including India yes that is right India सहित आ बहुत गुडा कंट्रीज माने भी इथरे इन्वॉल्व अछंती हला खास करके हमें जदी देखिबा इथियोपिया आ यूके इंडिया इथियोपिया यूके माने सब इन कंट्रीज इन्वॉल्व अछंती एयर ऑफ द एंथ्रोपोसेन इनिशिएटिव रे सो स्टेटमेंट 1 हमरो भूल हे गेला स्टेटमेंट 2 इज राइट स्टेटमेंट 3 इज राइट so our options अच्छी 1 2 3 तो हबनी हैला बिकॉज़ हमर फर्स्ट टा भूल हितला तो एटा हबनी सो 2 and 3 is the correct answer 2 and 3 is the correct answer next fourth number question देखो consider the following statements with reference to the Pradhan Mantri Awas Yojana. Pradhan Mantri Awas Yojana regarding किछटा तुमको एठी देची statements. तो कोटा ठीक हबो ए भितरु under PMAY Gramin beneficiaries are provided financial assistance of 1.2 lakh in plain and hilly areas. Please read it again. प्लेन आउ हिली एरियाज दीटा जाको एरियाज रे तुमको एथिकी असिस्टेंस दिया जाउची बोली स्टेटमेंट रे लिखा है सेकंड स्टेटमेंट इज 3 लाख इज प्रोवाइडेड अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप वर्टिकल सो व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट ट्राई टू आंसर तमे जानि छ ऑलरेडी प्रधानमंत्री आवास योजना विषय रे तो ता रिगार्डिंग कोनटा को दीटा स्टेटमेंट ए भितरो करेक्ट Try to answer. So neither 1 nor 2 हला दीटा भितरो किछि भी तमरो ठीक नै
प्रथम से कहला 1.2 लाख प्लेन एरियाज पे प्रोवाइड करा जिवो, हिली एरियाज पे टिके 1.3 लाख प्रोवाइड करा जाय, अधिक प्रोवाइड करा जाय हैला। ता छडा अंडर द PMAY अर्बन तो दीटा आरो सेक्टर अछि, गोटे हैला अर्बन पे आ गोटे हैला तमरा रूरल पे। तो अर्बन पे 3 lakh is provided under the affordable housing in partnership vertical. Urban under रे फिर अगेन 4टा खंडे vertical अछि हैला, 4टा vertical रे अलगा अलगा तमरो पैसा अलॉट करा जायछि। सो बेसिकली जते हम AHP vertical देखिबा सेतिर 3 lakh अलॉट करा जाय नाही हैला, बट कैन यू से केते अलॉट करा जायतिबो सेठी AHP अंडर रे? AHP अंडर रे तमरो 1.5 lakh अलॉट करा जायछि हैला। So 3 lakh is not provided under AHP, 1.5 lakh. So दीटा भितरु कोनोसे भी स्टेटमेंट हमरो एठी ठीक नै। नेक्स्ट, with reference to the great scheme of the Ministry of Textiles, consider the following statement. Great scheme विषय पचारछि एंड ता रिगार्डिंग किछिटा स्टेटमेंट्स हमरो एठी देछि। It aims to promote innovation and entrepreneurship in the technical textile sector. हैला, obviously because it is तम क्वेश्चन रे ही देछि कि it is under the Ministry of Textile, तो textile sector रे entrepreneurship आउ innovation को promote करिवो, which is correct. Second statement is it provides grant in aid up to 20 lakh for a period of 24 months. 20 लाख दिया जिवो for a period of 24 months, which is correct. Hello, good morning Nritya Madam. Then it is exclusively open to individual entrepreneurs and excludes startups and companies, which is not right. Hello, so see startup को भी include करे and तमरा एंटरप्रेन्योर्स भी रहिबे, स्टार्टअप्स भी रहिबे, अलगा कंपनीज भी रहिबे जे टेक्सटाइल क्षेत्र रे काम करछन्ती। सो इट डज नॉट एक्सक्लूड बट इट रादर इंक्लूड्स। सो स्टेटमेंट 3 हमरो भूल हेगला, बाकी दीटा स्टेटमेंट इट करेक्ट हैला। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो प्रथम स्टेटमेंट सेठी, सेकंड स्टेटमेंट एठी लिखा है। Digital Health Initiative scheme रे, it was meant for digitizing patient health records and linking them with the Abha ID. Abha ID माने Ayushman Bharat Digital Health Account. अच्छा, okay Padmalya, good morning. So it is linked with the Abha ID. Second statement is it is applicable to public hospital only. So which of these statements are correct? कहलो सो बेसिकली जदि हमें देखिबा इटा ठीक डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम अंडर रे तमरो पेशेंट रो सब रेकॉर्ड हमर गोटे आभा आईडी रे रहइबो। जे कोनो से भी हम हॉस्पिटल रे जिबा दे हमको से माने कहबे गोटे आभा आईडी क्रिएट करो, बिकॉज़ सेथिरे हमर सब डिजिटल रेकॉर्ड हिसाब रे रहइबो हैला। जेमति हमें हमर पैन कार्ड ए सब गोटे हमर स्टोर करूछु ना गोटे पोर्टल रे। गुड मॉर्निंग सत्यगुना सेमिति सब हेल्थ रिकॉर्ड हमर आभा आईडी रे रहइबो। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट कहू छै इट इज एप्लीकेबल टू पब्लिक हॉस्पिटल्स ओनली। नो, it is applicable to public hospital, it is applicable to private hospital, it is applicable to clinics हैला, समस्त को पाइटा applicable, not only limited to public hospitals. Okay, so that means only one is the correct option here. Seventh question देखो, with reference to the Krishi Saki consider the following statements हैला। when you are writing the answer please mention तमे को क्वेश्चन रो आंसर दोछ, बिकॉज़ मते एठी टिके लेट रे शो करूची। सो मु भाबी देबी मे बी तमर ए क्वेश्चन रे करथबो। सो प्लीज मेंशन द क्वेश्चन नंबर व्हाइल यू आर कमेंटिंग द आंसर्स। ओके, गुड मॉर्निंग विवेकानंद। सो कृषि सखी इज वन डायमेंशन अंडर द पीएम किसान सम्मान निधि अंडर रो गुटे डायमेंशन होची कृषि सखी। इट Krishi Sakis are trained by professionals on various agriculture related extension services for 56 days
on various activities. So Krishi Saki माने आमे कोन बुझिजो women Saki माने आमे women को relate करि परिबा हला. So now try to answer. कोन हबार answer? Good morning Vivekananda, good morning Karunakar. कोन हबार answer? So statement 1 कहिछि कि it is a dimension under the PM Kisan Samman Nidhi, that is wrong. जेहेतु एटा कृषि सखी अछि, it is mainly for women. तो women पे हमरो आउट प्रोग्राम तमे जानथिबो लखपति दीदी हला. तो ता अंडर रे तार गोटे डायमेंशन होछि एटा. सो लखपति दीदी प्रोग्राम रो और स्कीम रो डायमेंशन होछि कृषि सखी. सेकंड स्टेटमेंट जो देछि कि सेथिरे से सखी मान को माने वुमेन हु आर इन एग्रीकल्चर, they are trained by professionals on various agricultural related extension service. तांको ट्रेनिंग दिया जिवो वुमेन मान को who are from the agriculture sector, तांको proper training दिया जिवो for 56 days various activities regarding. So statement 2 only will be the right answer हला. one टा हमरो भूल हे जाउची, it is under the Lakhpati Didi program. Next, viability gap funding is related to which of the following? Dam construction, education of girl child, prevention of road accidents, or offshore wind energy project. कौन हबा? So it is the viability gap funding scheme ta तमरो mainly it is related to the offshore wind energy project. एटा मन रखिबा हमें कि ए scheme ta offshore wind energy project सहित related अछि. Next, consider the following statements regarding the School in a Box initiative. So चारिटा दीटा स्टेटमेंट तमे पढ़ी परिबो एंड चारटा ए चारिटा ऑप्शन भितरु कोटा राइट यू कैन आंसर मी हियर हला. ट्राई आंसरिंग. यस, क्वेश्चन नंबर 8 और डी करेक्ट पद्मालया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 रो कोन हबो? स्कूल इन ए बॉक्स, इट इज डिजाइन्ड टू कैटर टू ए चिल्ड्रन एज 6 to 18. चिल्ड्रन मान को पे डिजाइन हेची जो माने 6 to 18 years of age, providing them with educational materials during displacement due to disasters. It is a collaboration between UNICEF and the state government in India. तो को दीटा स्टेटमेंट ठीक ना दीटा स्टेटमेंट भूल ना कोटा ठीक ना कोटा भूल. ट्राई करो आंसर करिए पे. So question statement 1 is also right, statement 2 is also right. Yes, 6 ରୁ 18 वर्ष पिला मन को एजुकेशनल मटेरियल्स प्रोवाइड करा जिवो डिजास्टर टाइम रे जेमति तांगर पढ़ाटा न भांगो माने कंटिन्यूएशन तांगर न भांगो पढ़ारे हला. एजुकेशन टाको कंटिन्यू करिया पे गुटे स्कूल इन ए बॉक्स इनिशिएटिव बना हेची जो थरे इवन तांको टैबलेट्स एंड लैपटॉप भी प्रोवाइड करा जिवो विथ स्टडी कंटेंट हला. सेटा भी स्कीम रे अछि कि तांको लैपटॉप और टैब भी प्रोवाइड करा जिवो ता सहित तमर खाता बही पेंसिल पेन से सब जिंस तांको प्रोवाइड करा जिवो ड्यूरिंग द डिजास्टर खास करके. आउ इट इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन यूनिसेफ एंड द स्टेट गवर्नमेंट. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द स्किन बैंक फैसिलिटी? स्किन बैंक फैसिलिटी किए लॉन्च करिछि टू ट्रीट सीवियर बर्न इंजुरीज एंड अदर स्किन कंडीशंस. आंसर करो. इज इट बाय इंडियन आर्मी, इज इट बाय एम्स, इज इट बाय ICMR और इज इट बाय द Serum Institute of India? टेन रो आंसर कौन हबो? बी. सो ना रो सेमति लागि पारे बिकॉज़ एटा स्किन बैंक फैसिलिटी अछि तो मे बी एम्स रो ए थिबो प्रोविजन बट नो, एम्स इज नॉट द आंसर. आंसर होची इंडियन आर्मी रो एटा गोटे इनिशिएटिव हैला. इंडियन आर्मी रे गोटे स्किन बैंक फैसिलिटी रिसेंटली लॉन्च करा जायछि
इंडियन आर्मी रे हैला तो एटा बस मन रखिबो एटा एम्स नुह कि इट इज नॉट रिलेटेड टू आईसीएमआर और सेरम इंस्टीट्यूट इंडियन आर्मी रो गोटे एमती रिसेंटली लॉन्च करा जाई स्किन बैंक फैसिलिटी जो थरे कि जो ऑलरेडी डिजीज्ड माने जो ने मरि जाई छथि जो मनुष्य माने तांकर स्किन टाको प्रिजर्व करके रखा जिवो फ्रोजन फॉर्म रे हैला एंड देन जदि आउ कोनोसी पर्सन रो किछि स्किन इंजरी होछि ड्यू टू बर्निंग तो ए जो फ्रोजन फॉर्म रे स्किन टा रखा हेथिबो ताको से माने स्किन ग्राफ्टिंग मेथड रे से बर्न पर्सन को से न्यू स्किन से माने दे परिबे हैला सो अंडर दिस फैसिलिटीज तमरो मरिबा लोकर स्किन टाको स्किन से माने डोनेट करिवे जेमति हमें सब ऑर्गन को डोनेट करछु तो स्किन डोनर्स भी सेमती थांती ठीक है तो जो माने निजर स्किन को डोनेट करेंगे से स्किन टाको परे भल से टेस्ट भी करा जाए कि स्किन रे किछि इन्फेक्शन तो नहीं सेमती किछि नहीं देन जदि स्किन टा भल कंडीशन रे थाए ताको फ्रोजन फॉर्म रे तमरा रखा जाए अप टू 5 इयर्स भितर जेमति हमर ब्लड बैंक रे ब्लड दरकार हले हमें संगे संगे ब्लड नै परिबा स्किन बैंक रे स्किन रहइबो जहा को दरकार थिबो से स्किन दा सेठु नै कि ग्राफ्टिंग मेथड रे नोआ स्किन से जनरेट करि परिबो okay so this is an initiative of the Indian Army. Next, eSakhsya app recently seen in the news is related to which of the following? Blue economy, recording scene of crime in criminal case, education for women in rural India, none of them. कौन होगा आंसर? कौन होगा कहला? क्वेश्चन नंबर से तो आंसर लिखिबो what will be the answer please everybody please try to answer करुणाकर और जीजी मैंने सब देखु छ शत्रुघ्न everybody try to answer you may be wrong किछ असुविधा न so ई साक्ष्य साक्षी हम जो कहू ना जो गवाह साक्षी तो दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू कोर्ट मैटर माने हम एटा क्राइम सीन सहित रिलेट करि परिबा तो रिकॉर्डिंग सीन ऑफ ए क्राइम इन ए क्रिमिनल केस हैला तो गुटे किछि क्रिमिनल केस हैला तो सेही केस रे तमरो ई एविडेंस हिसाब रे गुटे मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन लॉन्च करा जाय छै बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो से माने कोन करिवे कि जो पुलिस ऑफिशियल खास करिकी हैला से माने जाय कि से क्राइम रो गुटे सीन रिकॉर्ड करि परिबे आ ताकू स्टोर करिवे यस ताकू स्टोर करिवे स्टोर कला परे ताकू एफआईआर टाइम रे से रिकॉर्डिंग टा यूज करा जाय परिबो 4 मिनिट रो मैक्सिमम रिकॉर्डिंग हे परिबो हैला सो ऑप्शन बी इज राइट ई साक्ष्य ऐप इज रिलेटेड टू द recording scene of the crime in criminal case. 12th question. Consider the following statement regarding the Ullas Naavu Bharat Saksharta Karyakram Ullas NILP. So कौन हमको first statement होची it is a state sponsored scheme aimed at achieving 100% literacy in primary school. It is a state sponsored scheme. कहिछि ओके नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिबा कोन होची नेक्स्ट स्टेटमेंट होची Ladakh has become the first union territory to achieve full functional literacy under this program and this Ullas at NILP focuses on foundational literacy critical life skills and vocational skills for adults age 14 and above and fourth statement hochi it relies on traditional classroom teaching methods. So out of this which statements are correct? First statement कहला कि it is a state 100% state sponsored scheme. Second आउ third fourth तमे एठी देखि परथो तो मैं एठी लिखि दोची first हला से कहिथिला it is a state sponsored scheme. So ए चारिटा भितरु कोन कोन हमर स्टेटमेंट एठी ठीक अछि कौन है भावुच फर्स्ट स्टेटमेंट जो कहला 100% इट इज स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम दैट इज नॉट करेक्ट हैला इट इज नॉट ए स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम
ओके तो को प्रकार स्कीम एटा यस इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नाउ आई होप यू आर क्लियर कि स्टेट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर स्कीम भीतर कौन डिफरेंस नेक्स्ट क्वेश्चन भी किसी आसीबो रिगार्डिंग दिस सेंट्रल सेक्टर स्कीम रे आउ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम रो डिफरेंस हला सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम रे तमरो मैक्सिमम फंडिंग सेंटर दबा बट स्टेट भी किछिटा फंडिंग दबा हैला एंड इंप्लीमेंट किए करिवो स्टेट इंप्लीमेंट करिवो बट जदि स्टेट सेक्टर स्कीम सॉरी सेंटर सेक्टर स्कीम अछि देन सेठी 100% सेंटर ही फंडिंग करिवो आ सेंटर ही से स्कीम टा इंप्लीमेंट करिवो सेंट्रल सेक्टर स्कीम आउ स्पॉन्सर्ड स्कीम रे स्टेट रो भी किछिटा दायित्व रही है स्टेट इंप्लीमेंट करिवो सो ए जो उल्लास एनआईएलपी टा इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आउ इट फोकसेस ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी क्रिटिकल लाइफ स्किल इज करेक्ट हैला 15 वर्ष एबव रे सेमान को स्किल प्रोवाइड करा जिवो फोर्थ स्टेटमेंट जो कहू छी कि क्लासरूम टीचिंग मेथड यूज करा जिवो नो ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग मेथड नो यूज करके हमें यू नो जेति की मॉडर्न टीचिंग मेथड्स अछि ऑनलाइन ट्रेनिंग अछि सेथिरे हमें रिलाई करि परिबा हैला सो फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग 2 and 3 is the correct answer then we have considered the following statements about the district mineral foundation both thara question bhi aschi district foundation mineral foundation dmf are established in all districts of the state सब district of the state रे सेटा establish करा जायछि एठी ही रॉन्ग हे गला सब district रे अप्लाई करा जायनी district mineral फाउंडेशन माने जोठी तमरो खनि उत्पादन हुए से जगह रे ही अप्लाई होतबो हला तो आमर जमती ओडिसा रे केउंझर कोरापुट रायगड़ा जोठी भी आमर माइनिंग हुए से माने से डिस्ट्रिक्ट को ही एटा लागू हुए माने से डिस्ट्रिक्ट रे गुटे फंड एस्टैब्लिश करा जिवो बिकॉज़ माइनिंग जो सब बहुत से आख पाख लोकर खेती भी हुए तो सेमान करो इंप्रूवमेंट पे सेमान करो सपोर्ट करिया पे गोटे फंड जनरेट करा हुए कोस डिस्ट्रिक्ट मान करे जोठी तमर माइनिंग होची सो एटा तो रॉन्ग हे गेला कि एटी ऑल डिस्ट्रिक्ट कहैछि सो ऑल डिस्ट्रिक्ट नो ओनली माइनिंग डिस्ट्रिक्ट हबो हला नेक्स्ट हला द प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना is implemented through DMF to cater the welfare of the people and areas affected by mining तो कौन होबो एटा ठीक सो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना इंप्लीमेंट करा जाए थ्रू द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन to cater the welfare of the people and areas affected by the mining hala so only statement 2 is the correct answer clear okay next 14 ra dekho with reference to the smart cities mission which of the following is or are correct it is an initiative of the Union Housing and Urban Affairs Ministry launched in 2015 it aims to promote cities that provide core infrastructure clean and sustainable environment and give a decent quality of life yes smart cities mission tak amara launch heitla 2015 re by the Union Housing and Urban Affairs Ministry so that is correct and it aims to promote cities mankar infrastructure improve kara jibo clean cities you know smart city amar Bhubaneswar dekhuthbo पटसा हेले कोन हालत हे जाय राइट तो ये सब जिंस हमरो ए दीटा जाको स्टेटमेंट ठीक अछि हला किछि भूल नहीं सो बोथ 1 and 2 are correct under the smart cities mission next statement sorry question number 15 Seher program sometimes appeared in the news primarily because of financial literacy urban planning maternity benefit or climate smart agriculture try to answer 14 number be both yes 15 ro answer कौन हबो 15 रो आंसर कौन हबो कम ऑन Seher program try to answer
15 number B. Seher program तमें सुनी देलो तो भाबुथु it is related to urban planning, but no. Seher माने city, city माने urban, no. Urban planning is wrong. Actually एरे आंसर होची financial literacy. हैला Seher program रे तमरो women entrepreneurs माननको financial literacy दिया जीवो. हैला एटा मन रखिबो urban planning मारिके आसीबो नहीं. हैला so एथिरे no, it's not B, it's not D. It is related to financial literacy program for the women entrepreneurs. हैला तो women entrepreneurship platform आउ तमरो civil platform, civil जानथिबो trans union civil platform हैला तो plus your women empowerment entrepreneurship platform ए दी जनो कंबाइन करिकी ए शहर प्रोग्राम टा को लॉन्च करछनी जोथरे कि तमरो फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम क्रिएट माने दिया जेबो टू द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो माने वुमेन बिजनेस ओनर्स अछंती हैला तांको एसेंशियली फाइनेंस विषय रे किछि शिक्षा दिया जेबो अंडर द शहर प्रोग्राम सो इट इज नॉट रिलेटेड टू अर्बन प्लानिंग एंड ऑल ओके बी केयरफुल नेक्स्ट हैला प्रोजेक्ट परी recently seen in the news is an initiative of answer karo project pari kaharo initiative is it from ministry of power ministry of culture ministry of women and child development or ministry of education interesting questions gudako 16 ro b yes so mostly samaste bhabi debe jehetu pari lekha haichi so it may be related to women right पापा की परिचय में कहूँ no it is not related to women but our full form है public art of India परी रो full form है public art of India and it is an initiative by the ministry of culture so जो थे हमरो public art गुड़ा को अच्छी है ना এটা কি execute করছি by the way ललित कला एकेडमी এটা execute करे and national gallery of modern art ए दी जन ताको execute करंती and जति कि हमरो लोक कला लोक संस्कृति रिलेटेड पेंटिंग्स और आर्ट फॉर्म्स अछि ताको शोकेस करबा एटा गोटे प्लेटफॉर्म ओके सो दिस इज रिलेटेड टू माने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर and it is an initiative by the ललित कला एकेडमी एटा मन रखिथिबो सो पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया होची तारो फुल फॉर्म नॉट पापा की परी सो इट इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर next 17th number question with reference to the digital Bharat Nidhi which of the following statements are correct it was established through the Telecommunication Act 2023 it replaces the Universal Service Obligation Fund dita visit to statement correct 17 ro answer 17 ro answer 1 only 2 only both 1 and 2 neither 1 nor 2 पढ़वा So first statement is right. It was established through the Telecommunication Act 2023. Second statement be right. It replaces the Universal Service Obligation Fund. हैला तो आगुरु Universal Service Obligation Fund तमरो थिला. हैला it's not one only शत्रुघ्न both are right. हैला एटा तो no doubt it is established under the Telecommunication Act and it replaces the old fund आगुरु जो Universal Service Obligation Fund तमरो थिला हैला तो सर्विस फंड जो थिला सेथिरे बेसिकली गवर्नमेंट तमरो अराउंड 41,000 crore कलेक्ट करथिला एज अ टैक्स बट सेठू ओनली 72% तमरो यूटिलाइज हेतिला तो बाकी यूटिलाइज हेई पारि नथिला सेइतबे तमरो नुआरे आ गोटे आसिला डिजिटल भारत निधि हैला डिजिटल भारत निधि आसिला 2023 रे एस्टैब्लिश करा गला अंडर दिस टेलीकम्युनिकेशन एक्ट एंड एटा को से रिप्लेस कला ओके रिप्लेस कला कोन पे बिकॉज़ जेति कि से माने टैक्स कलेक्ट करिथिले ओनली 72% सेथरु से माने
माने कोन यूटिलाइज करथिले बाकी यूटिलाइज करा जाय नथिला हैला तो बेसिकली टेलीकॉम नेटवर्क्स रो एक्सपेंशन रिगार्डिंग एटा करा जायथिला हैला सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट both the statements are correct 18 number Naavu Manujaru which of the following statement is correct regarding the Naavu Manujaru program Naavu Manujaru program kon It provides farmers with investment support for agriculture and horticulture. It aims to inculcate social harmony and constitutional values among children. It gives safe and conveniently located accommodation for working women, or it focuses on the protection of rights of the transgender people. Kon hob answer and their welfare. So what will be the answer? What will be the answer and can you tell me which state has implemented this? Which state has implemented this? Come on. Again I am telling question number सहित लिखु थ को question no Tamil Nadu has not implemented this it was or it is implemented by Karnataka government has implemented this sorry Karnataka government has implemented this so it is related to the inculcation of social harmony and constitutional values among children हैला 18 रो डी नुह 18 रो बी तो बेसिकली नावु मनुजारू प्रोग्राम रे कोन हुए कि स्टूडेंट्स मानकर प्रति वीक रे हैला एटलीस्ट 2 घंटा वीकली 2 आवर्स डिस्कशन मैंडेटरी करा जाय छी जोथरे तांको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज रिगार्डिंग तांको किछि शिक्षा दिया जीवो कि सोशल हार्मनी से माने केमते मेंटेन करिवे ता रिगार्डिंग शिक्षा दिया जीवो पब्लिक स्कूल हो प्राइवेट स्कूल हो हैला जे कोनोसी भी स्कूल हो माने गवर्नमेंट स्कूल हो प्राइवेट स्कूल हो कि गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन हो जेति की भी हो सब स्कूल गोडा करे तमरो एठी छुआ मन को चिल्ड्रन मन को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज रिगार्डिंग सोशल हार्मनी रिगार्डिंग हफ्ता को 2 घंटा हमरो सेठी क्लास गोटे रहिबो ओनली स्पेशली डेडिकेटेड टू दिस हैला so it is by the Karnataka government and is related to the inculcation of social harmony and constitutional values among the children. Consider the following ombudsman scheme for banking, for non-banking, or for digital transactions. So, tinta ombudsman scheme dechi. How many of these schemes is a unified framework under the integrated ombudsman scheme? ए tinta scheme भितरो को scheme ता integrate करा जायछि माने तमरो unify करा जायछि under the integrated ombudsman scheme. जानि छ सो जदि हमें देखिबा तमरो बैंकिंग स्कीम टा जो फर्स्ट अछि जोड़ा आस्तेला तमरो 2006 रे हला बैंकिंग अमेंडमेंट स्कीम तापर तमरो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल टा आस्तेला केबे 2018 रे हला और डिजिटल ट्रांजैक्शन अमेंडमेंट स्कीम आस्तेला हमरो रिसेंटली आस्तेला 2019 रे सो ए तीनटा जक को इंटीग्रेट करा जायछि अंडर द इंटीग्रेटेड अमेंडमेंट स्कीम सो ऑल 3 आर इंटीग्रेटेड एंड नाउ ऑल 3 आर अंडर द integrated ombudsman scheme hela as said by the RBI. Next question, what is the primary goal of the Asmita project sometimes seen in the news? Odia Asmita Odia Asmita kona एते आमे सुनुछु ओडिया अस्मिता माने दैट इज रिलेटेड टू लैंग्वेज सो अस्मिता एठी तमे चारटा स्टेटमेंट पढो
It is to promote online education platform. It is to produce high quality study material in native languages, or to develop digital infrastructure in school, or to train teachers in modern pedagogy techniques. So answer कौन होगा? To produce high quality study materials in native languages. है ना? ओडिया अस्मिता में कथा में कहूचे. So ओडिया रे हमरा सब लेखा से सब होची. Study material भी high quality study material. जेमती तुमको Rayacademy provide करे ओडिया भाषा रे भी तुमको provide करूची ना material. तो ओडिया अस्मिता अंडर रे हमें भी we are also participating, right? So to produce high quality study material in native languages. Okay, next. Consider the following statement with reference to the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. बहुत पुराना स्कीम ना जाने सब आविष्कार की छोटा details. It was launched in 2000 and it is a centrally sectored scheme. The Ministry of Rural Development and is the nodal ministry for this scheme. Which of the statements are correct? हुआ? केबे लॉन्च होइतिला ग्राम सड़क योजना? दुई हजार लॉन्च होइतिला, दैट इज राइट हला. किंतु it is not a central sector scheme, it is a centrally sponsored scheme. And barambar mu kochi centrally sponsored scheme mane major portion of the fund will be given by the center, but state samara kichita fund sethre state ro bi rahiba and implement ke karibo state implement karibo. But jodi mu central sector scheme koi dochi then 100% seta सेंटर दायित्व, सेंटर फंडिंग करिवो, सेंटर ही इंप्लीमेंट करिवो. तो वर्तमान एटा जो हितला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सेटा गोटे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थिला, नॉट ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम. सो एटा भूल ही गला. नेक्स्ट जोटा कहिछि इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, दैट इज करेक्ट. सो स्टेटमेंट 2 इज ओनली करेक्ट हैला. सो बी ओनली विल बी द आंसर हैला. And I hope तुम जानिछ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कोन रूरल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करिया पे ए योजनाटा अना जायतिला 2000 रे इन द ईयर 2000. ओके, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना recently seen in the news is proposed by which government? Assam, Uttar Pradesh, Maharashtra or Rajasthan? को गवर्नमेंट एटा तमन करिछि मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना? So it is basically by the Maharashtra government हैला. महाराष्ट्र गवर्नमेंट एटा को रिसेंटली प्रपोज करछन्ती. युवा माने दैट मींस हमें यंग पीपल मन को बुझिबा. सो जो माने यंग अनएम्प्लॉयड पर्सन्स अछंती हैला, जो माने यंग अनएम्प्लॉयड पर्सन अछंती इन द एज गैप ऑफ 18 to 35 हैला. जो मानकर एज 18 to 35 तांको गोटे पर्टिकुलर स्टाइपेंड प्रोवाइड करा जिवो हैला. स्टाइपेंड प्रोवाइड करा जिवो दैट टू तीनटा अलग अलग सेक्टर रे. माने जे 10th पास करिछि हैला और जे 12th पास करछि. फॉर एग्जांपल जो माने 12th पास करछले तांको 6000 स्टाइपेंड प्रोवाइड करा जिवो. जो माने आईटीआई करछथि से मान को 8000 दिया जिवो हैला. आ जो माने जो माने तमरो डिग्री करछथि पोस्ट ग्रेजुएशन करछथि तांको अप टू 10000 तमरो एठी स्टाइपेंड दिया जिवो अप टू ए पीरियड ऑफ 6 months बुझे ना. सो दिस इज बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो थरे कि तमरो अनएम्प्लॉयड यूथ मानको अनएम्प्लॉयड यूथ मानको 6000 8000 एंड 10000 तमरो एठी स्टाइपेंड प्रोवाइड करा जिवो फॉर ए पीरियड ऑफ 6 months हैला. अलग अलग जे 10th पास और जे 12th पास ताको 6000, जे आईटीआई करछि ताको 10000, ए ताको 8000 और जे ग्रेजुएशन करछि ताको 10000 प्रोवाइड करा जिवो. दिस इज द मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना. नेक्स्ट देखो which of the following is the primary objective of the कीर्ति प्रोग्राम? कीर्ति प्रोग्राम कौन? कीर्ति रो फुल फॉर्म कौन?
कीर्ति रो फुल फॉर्म कोन फुल फॉर्म जानिले तमे ऑलमोस्ट जानि दिबार आंसर कोन कीर्ति रो फुल फॉर्म कोन हेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन सो जिते मैं कहूँ राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन तो दिस ऑप्शन इज मोर वायबल टू मी व्हाई बिकॉज ऑप्शन बी कहूँ टू स्ट्रीमलाइन द एंटायर प्रोसेस ऑफ ग्रासरूट टैलेंट आइडेंटिफिकेशन माने जो माने तमरो 9 रु 18 वर्ष पर्यंत जो छुआ माने अछंती तांको टैलेंट ग्रासरूट लेवल तांको टैलेंट आइडेंटिफाई करा जिवो एंड तांको प्रॉपर गोटे स्ट्रीमलाइन को अना जिवो हैला सो अंडर द कीर्ति प्रोग्राम खेलो इंडिया टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम 23 रो जदि पूरा हमें देखिबा देखो ऑप्शंस किछि नाही आ परे हैला सो सेमती किछि पचारिनी कि 1 2 एंड 3 तमे जेमती कहलो शत्रुघ्न ओनली गोटे ही स्टेटमेंट से भितर ठीक है ये चारिटा भितर गोटे स्टेटमेंट ठीक व्हिच इज दिस कि से एंटायर जो छोट छुआ मानकर जो मानकर पाखे टैलेंट अच्छी तांको खोजी कि आने कि गोटे स्ट्रीमलाइन रे रखा जिवो है गोटे सिंगल प्लेटफॉर्म रे तांको रखा जिवो सो दिस इज द करेक्ट आंसर इट इज नॉट टू प्रमोट इंटरनेशनल स्पोर्ट कोलैबोरेशन इट इज नॉट रिलेटेड टू अर्बन स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बट राइजिंग स्टार राइजिंग टैलेंट को खोजा जिवो ओनली एटा ही तार मेन objective of the Kirti program Khelo India Rising Talent Identification है ना तो talent identification is the answer clear okay next 24 देखो recently to promote environmental sustainability which of the following state government has mandated कि जति कि भी टूरिस्ट व्हीकल तांकर स्टेट को जिबे से माने निज सहित गोटे लार्ज गार्बेज बैग कैरी करके जिबे हैला को गवर्नमेंट एटा लागू करी which state has this particular mandate एटा करी कि जति कि भी टूरिस्ट व्हीकल तांकर स्टेट को एंट्री करिवे समस्त निज सहित गोटे गार्बेज बैग लेके जिबे किए हेतो भाबुचे उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश केरला और सिक्किम किए हेतबो सबू एमतिया स्टेप्स रे एक गोटे पर्टिकुलर स्टेट सबु बळे आगे अछि सबु बळे आगे थाए गोटे पर्टिकुलर स्टेट किए सिक्किम हला तमे देखिबो फर्स्ट प्लास्टिक बैन किए करथिला सबु पूरा जदी इंडिया रे देखिबा फर्स्ट स्टेट जे 100% प्लास्टिक को बैन करथिला इट वाज सिक्किम राइट फर्स्ट ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट कोटा हिथिला सिक्किम राइट नो इट्स नॉट सी इट विल बी डी हैला सो फर्स्ट ओपन डेफिकेशन फ्री हिथिला प्लास्टिक यूजेस बंद करथिला ए सबुरे सिक्किम आगुआ थिला तो ए जो पर्टिकुलर माने इनिशिएटिव नै छी सो सिक्किम इज द ओनली स्टेट टू डू सो बुझिलो सिक्किम हबल आंसर नेक्स्ट इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस ICAL International Center for Audit of Local Governance recently seen in news has been inaugurated in which of the following states of India कहलो कि एटा हबो आंसर 25th आंसर कोन हबो 25th आंसर कोन हबो
it will be Gujarat. Hello. International Center for Audit and of Local Governance ICL recently तमरा launch ହେଇची और inaugurated ହେଇची गुजरात रे. तो सेठी basically policy maker जो माने भी अछंती हैला law maker policy maker और तमरा local governance समस्ते मिसी की काम करिवे and it will strengthen the local governance in that particular area. So Gujarat will be the हैला गुजरात एटा inaugurate करिची recently एटा मन रखी तो for enhancing the local governance in that area. वात्सल्य स्कीम विषय पढ़थिबो 2024-25 बजेट रे गोटे वात्सल्य स्कीम आसिला फॉर माइनर्स हैला. सो दिस स्कीम इज रिलेटेड टू एजुकेशन हेल्थ पेंशन नॉन एट द अबव. एटा इजी अछि. एटार आंसर दियो 26 रो आंसर कोन हबो. वात्सल्य स्कीम कहा से रिलेटेड. अरे आंसर दियो. क्लास रे इंटरैक्टिव रहिले ही मते भल लागिबो. अदरवाइज मु जने जने माने मु जने ही जदी बकबक होथिबी कोन मजा लागिबो. देखो सो उटा हमर एनपीएस स्कीम थिला माने एबे भी अछि नेशनल पेंशन स्कीम. नो इट इज नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन हला. सो एनपीएस स्कीम गोटे अच्छे हमर नेशनल पेंशन स्कीम जो कि जो माने चाकरी करंती किछि पैसा एथरे कंट्रीब्यूट करंती. गवर्नमेंट से पैसा टाको किछि बॉन्ड्स रे इन्वेस्ट करे कि स्टॉक मार्केट रे इन्वेस्ट करे रिस्क फ्री थाए सेटा. एंड आफ्टर आवर रिटायरमेंट हमको किछिटा पैसा मिलिबो एज अ पेंशन हला. रिटायरमेंट परे किछि पेंशन मिलिबो. हमें जहां सेव करथिबो सेतरे गवर्नमेंट किछि इंटरेस्ट मिसे कि हमको सेटा पेंशन हिसाब रे दबो रिटायरमेंट परे. एनपीएस स्कीम सहित आउ गोटे तुमरा रिसेंटली आसिला एनपीएस वात्सल्य हैला. वात्सल्य माने छोट छुआ रिलेटेड हमें बुझछु वात्सल्य प्रोग्राम. तो इट इज प्रपोज्ड फॉर माइनर. तो जो माने माइनर थिबे तांको भी हमें ए स्कीम अंडर रे आनी परिबे. माने जो माने 18 वर्ष हेई नाती 18 वर्ष तो नुह माने जो माने बहुत यू नो माइनर्स थिबे तो तांकर पेरेंट्स माने नहीं तो से मानकर पेरेंट्स माने यस से मानको पेरेंट्स माने तांको एनरोल करि परिबे से पर्टिकुलर स्कीम अंडर रे. सो सेतरे तांके किछि किछि कंट्रीब्यूशन करि लागिबे एंड इवन आफ्टर से माने जतल बुढा बुढी हेबे तांको सेतरु किछि गुडे पेंशन मिलेबो हला. सो दिस इज रिलेटेड टू पेंशन हला. माइनर मानको भी माइनर माने भी एनपीएस रे वर्तमान रजिस्टर करि परिबे अंडर द एनपीएस वात्सल्य स्कीम. क्लियर. ओके 27th रे देखो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन रिगार्डिंग किछटा स्टेटमेंट्स देछि. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन private and public hospitals must adopt it as it aims to achieve universal health coverage. Every citizen of India should be part of it. Which will be the correct answer. Third statement भी गुटे अच्छी. It has seamless portability across the country. So तीनटा statement भितरु कोटा आंसर होबो मते कहलो. किछिटा पर्टिकुलर वर्ड्स ऊपर फोकस करो. A. Sridhar is saying A. Satrughna is saying 1 and 3. Let us see. Private and public hospitals must adopt it. Must word is not appropriate here. माने से माने बाध्य adopt करिया पे सेमती किछि नुह. It is voluntary. कंट्री माने voluntarily से माने एटा को adopt करि परिबे कि न भी करि परिबे किछि बाध्यतामूलक नुह एटा हैला.
So must is not a correct word answer here. Voluntarily से माने adopt करी परिबे न भी करी परिबे हैला. So एटा wrong हे गला. It aims to achieve universal health coverage. ठीक अछि. Every citizen should again आमे समस्ते बाध्य हो कि सितरे न हेले कोन हमको जेल दंड मिल जिवो कि नाइ सेमथि किछ नो और should be part of it ultimately माने anyhow you have to be part of it सेमथि भी किछ नो. Again that depends person to person हैला. किछि मैंडेटरी नो कि सब सिटिजन सेतरे पार्टिसिपेट करियार अछि. जेमति अटल पेंशन योजना अछि समस्त सितरे पैसा दबा बिली किछि मान्य अछि कि सेमति किछि नै. It is your voluntary माने contribution your wish. So ए पर्टिकुलर जो शुड लिखा है गला एटा भी भूल हे गला. बाकी इट हैज सीमलेस पोर्टेबिलिटी. जदि हमें देखिबा ऑल इंडिया रे 27000 हॉस्पिटल्स रे आमे हमरो ट्रीटमेंट करि परिबा अंडर द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हैला. ऑल इंडिया रे 27000 हॉस्पिटल रे आमे करि परिबा. जेमति हमरो आगुरु थिला बिजू कार्ड वाज ओनली एप्लीकेबल टू ओडिशा हॉस्पिटल्स ओनली राइट. बाहर स्टेट को जदि हमें जाउथुलो देन सेटा एप्लीकेबल हो नथला. बट जो आयुष्मान कार्ड हमको वर्तमान जो मिलिबो दैट विल बी एप्लीकेबल टू 27000 हॉस्पिटल्स इंडिया रे कोठी भी थिबो तमे सेठी यूज करि परिबो. सेति पे इट इज ए seamlessly portable across the country हैला. So only 3 is the correct answer हैला. So please read the options very carefully. भूल हबार चांसेस एटी थाए. सेमति किछि ड्रास्टिक रॉन्ग स्टेटमेंट से देनी हैला. पाखा पाखी ठीक देछि बट किछिटा माने वर्ड्स पे तमरे गड़बड़ हे किबो. So please be careful about it. 28 रो देखो एंड तार आंसर दियो निपुण भारत मिशन. मु मोर करंट अफेयर्स क्लास रे भी बहुत थोड़ा डिस्कशन करि छि रिगार्डिंग द निपुण भारत मिशन. तो ता रिगार्डिंग कोन कोन स्टेटमेंट्स तमरो एठी ठीक हबो. कहो हुआ answer of 28. What should be the answer of 28? Neither. Yes. Not none of the statements are correct. It is launched by Ministry of Skill Development. No. Nipun Bharat is mainly related to education na. The Ministry of Education eta launch karithila, not Ministry of Skill and Entrepreneurship department nahi. It focuses on foundational skill development for the labor force in India. Seta bhi nahi. Hello. Not for the labor force but kaha pai? Students मान pai. कि जो माने छोटो क्लास रे अछंती एटलीस्ट जो माने बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3 अछंती से मान को प्रॉपर न्यूमरेसी स्किल्स आसुतबा दरकार माने प्लस माइनस ए सब बेसिक जिंस आसुतबा दरकार. कहिबा रीडिंग एबिलिटी रहिबा दरकार. राइटिंग एबिलिटी दरकार. एतिकी मिनिमम रहिबा दरकार जदि जने स्टैंडर्ड 3 रो पिला रहुची. सो निपुण भारत वाज मेनली फोकस्ड ऑन दैट राइट. सो ऑप्शन 2 is also wrong. It is not related to labor force nor it is related to the Ministry of Skill Development and it comes under the National Educational Policy as well. Hello. So neither 1 nor 2 is the right answer. 29. 29 to kon answer. Consider the following statement with reference to the Pradhan Mantri Schools for Rising scheme, which is the PM Shri scheme. PM Shri schools गुड़ाक तमे जानिथिबो खोला हेछि. It is a central sector scheme that aims to establish over 14,500 PM Shri schools, or it aligns with the vision of the NEP. Which of the following statements are correct? Answer करे 29 रो C हबो. Both 1 and 2. Okay. आउ किए किछ कहबो?
सेंट्रली सेक्टर स्कीम कही सेंट्रल सेक्टर स्कीम नुह एटा पूरा सेंटर दायित्व सेंटर ही इम्प्लीमेंट करिवो नुह इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बारंबार कहूँ प्लीज जितकी भी स्कीम पढ़ुछ मेक श्योर कोटा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड कोटा सेंट्रली सेक्टर स्कीम है तो ये जो पीएम श्री योजना और द स्कीम दैट इज ए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम माने सेंट्रल मैक्सिमम स्पॉन्सर करिवो स्टेट भी किछि स्पॉन्सर करिवो और स्टेट इम्प्लीमेंट करिवो ना कि सेंटर प्रति स्टेट रे हम इम्प्लीमेंट करूछु ना हैला सो आंसर कोन हबो इट इज ए centrally sector scheme that is wrong but it aligns with the vision of the NEP 2020 that is right NEP 2020 vision so se align karibo so only statement 2 is right so answer will be B hello namaskar Vijay next which of the following statements about the Nirbhaya fund recently again current affairs class re निर्भया फंड विषय भी कथा हेतिली जोतरे कि नारी रैंकिंग विषय में कथा हेतिली नारी रैंकिंग रे दिल्ली इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी सो दिल्ली रो रैंक अछि 29 और सॉरी 28 अछि आउट ऑफ 31 सिटीज रे दिल्ली रोज तमा 28 रैंक रे इन द नारी रैंकिंग कोन पे थिला नारी रैंकिंग वाज रिलेटेड टू सेफ्टी ऑफ वुमेन हैला नेशनल कमिशन ऑफ वुमेन सेटा हमरो स्पेसिफाई करे सो नारी रैंकिंग कथा मु कोन पे कहली बिकॉज़ निर्भया केस ता हमरो हिथिला कोठी दिल्ली रे हिथिला तो से टाइम रे उटे निर्भया फंड तमरो प्रोग्राम आस्थिला सो द निर्भया फंड रिगार्डिंग किछ द स्टेटमेंट देछि कि इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इट इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर एनहांसिंग वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड इट इज अ लैप्सेबल फंड व्हिच ऑफ द statements are correct or wrong answer करो 30 रो आंसर कोन हबो मते को एठी तमरो ऑप्शंस देछि एठी हला एठी ऑप्शंस देछि कोन हबो मते को टू 30 रो 1 and 2 and 30 रो 2 जने कहउछन ओके सो 1 जदि हमें देखिबा इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट नुह इट इज आ गोटे को पर्टिकुलर मिनिस्ट्री इथरे इन्वॉल्व अछंती एटा भी इन्वॉल्व अछन माने मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन भी से माने इन्वॉल्व अछंती बट तांको छडा कि एडमिनिस्टर करे गोटे निर्भया फंड इज गोटे सेपरेट फंड करा जायछि जोथरे कि तमरो वुमेन रो सेफ्टी पय सेथरो फंड ता यूटिलाइज करा जाय परिबो बट सेटा को डिपार्टमेंट एडमिनिस्टर करूछि इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हला इकोनॉमिक अफेयर्स एटी जो एडमिनिस्टर्ड वर्ड ता लिखिछि तो इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स फाइनेंस डिपार्टमेंट हला मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ताको एडमिनिस्टर करे बट जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एक्ट्स एज ए नोडल एजेंसी हैला नोडल मिनिस्ट्री हिसाब रे काम करबो जे प्रपोजल्स को रेकमेंड करबो हैला सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थर्ड कहूची इट इज ए लैप्सेबल फंड माने गोटे वर्ष रे जदि से फंड यूटिलाइज हेई पारलानी देन सेटा लैप्स हे जीवो से फंड ता दैट इज नॉट करेक्ट जदि भी किछि पर्सन यूटिलाइज हेई पारलानी से फंड रो इट विल अगेन कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एज वेल सेटा लैप्स हबनी इट इज ए नॉन लैप्सेबल फंड सो स्टेटमेंट 3 भूल हे गेला इट प्राइमरीली इज फोकस्ड ऑन द enhancing women safety and security so only statement 2 will be the correct answer here hela statement 2 is the correct answer next with reference to the Atal mission for rejuvenation and urban transformation amrut scheme regarding kichita
points ଦେଇଛି. Amrut scheme was launched by the government in 2015 with its 2.0 version launched in 2021. It was drawn to cover 100 cities and towns with a population of over 1 lakh, and the purpose of the Amrut mission was to ensure every household has access to a tap and assured supply of water and a sewerage correction. So तीनटा भितरु को स्टेटमेंट हमरो ठीक हबो. 31 रो आंसर कोन हबो? 31 रो आंसर कोन हबो? फर्स्ट स्टेटमेंट कहला it was launched in 2015, that is right. और तारो जो सेकंड वर्जन 2.0 वर्जन 2021 रे लॉन्च हेतला, this is right हैला. And it was drawn to cover 100 cities, that is not right. But 500 cities को कवर करा जिवो, 500 cities and towns को कवर करा जिवो जहार पॉपुलेशन ओवर 1 लाख थिबो हैला. सो 100 cities लिखा हिजे सेते पय एटा भूल हे गला. एंड मेनली यार काम कोन, अमृत मिशन रो काम कोन कि प्रति घरे तमरो टैप रो एक्सेस थिबो हैला, एश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर थिबो एंड सीवरेज कनेक्शन भी थिबो हैला. सो शत्रुघ्न ऑल हबो नाही हैला. ए सेकंड स्टेटमेंट भूल हे जायछि बिकॉज़ तारो मिशन थिला 500 सिटीज को से कवर करिवो, नॉट 100 सिटीज. बाकी दीटा ठीक अछि. ये प्रॉपर सीवरेज कनेक्शन दिया जीवो, प्रॉपर एक्सेस टू पानी दिया जीवो, तमरो टैप कनेक्शन समस्त घरे मिलिबो. सो 1 and 3 विल बी राइट. सो दैट मींस ओनली 2 माने तीनटा स्टेटमेंट रो दीटा स्टेटमेंट ही हमरो ठीक हैला. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 32 एंड ट्राई टू आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट. सब बळे क्वेश्चन रे देखिबो कोटा कोठी जदि नॉट लिखा है, नॉट करेक्ट लिखा है, सेठी भूल हबार चांसेस बहुत अधिक थाए हैला. तो आर आंसर करो कोन हबो? विलेज डिफेंस गार्ड. It is constituted, the VDGs are constituted in identified vulnerable villages. VDG members are provided with arms and ammunition. The scheme is operational in all states and union territories and it is headed by a retired officer. So which is not a key feature? ए चारटा भितर कोटा आर की फीचर नाही. Okay, 32 रो C. Yes, it is not operational in all states. So village defense guard कोन के निजरो डिफेंस में किछिटा लोक तमरो लोक को आर माने वेपन्स दिया जीवो निजरो प्रोटेक्शन पे, निजरो डिफेंस में हैला. को विलेजेस को दिया जीवो जो विलेजेस को थ्रेट अछि, टेरर अटैक रो थ्रेट अछि. तो टेरर अटैक रो थ्रेट काहा को थिबो? जो माने हमर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स गुडा अछि तांको ही थिबो. सो से पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट रे ही तमरो एटा ऑपरेशनल हबो ई स्कीम टा. सब स्टेट्स और सब सिटीज को एटा दरकार नै हैला. सब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी पे एटा ऑपरेशनल नो, बट ओनली टू द बॉर्डर एरियास रे जो स्टेट्स गुडा को अछंदी सेमान को पे एटा एप्लीकेबल हैला. आल्सो सेथरे तमरो आर्म्स आ एम्युनिशन प्रोवाइड करा जिवो जो माने से पर्टिकुलर विलेज डिफेंस गार्ड रो मेंबर थिबे. एटा तमरो 1995 रो ही स्टार्ट हे सरथिला हैला. विलेज डिफेंस गार्ड ता तमरो 1995 रो ही स्टार्ट हे सरथिला, बट मझी रे सेटा बंद हे जायतिला हैला. एंड अगेन 2022 रे तको आउथरे रिवाइव करा हे. सेति पे हम एटा डिस्कशन करू जो नले हम डिस्कशन भी करन था. सो 2022 रे तांको एटा रिवाइव करा हे. एंड ए जो वीडीजीस थिबे तांको गोटे रिटायर्ड ऑफिसर हेड करबो. So that retired officer can be from army or police personnel हे परिवे जो माने रिटायर हेतिवे तांको अंडर रे एटा फॉर्म करा जिवो एंड तांको निजर सेफ्टी पे वेपन्स प्रोवाइड करा जिवो हैला. सो A B D is correct statement, not correct हमको पचरथिला. So D will be the C will be the correct answer over here. Clear?
33 कुह एटा इजी अछि लड़की बहन योजना रिसेंटली को स्टेट अनाउंस करिछि बिहार उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल व्हाट विल बी द आंसर लड़की बहन योजना कहार बिहार उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल 33 ର आंसर कौन हम so answer will be come on I'm waiting for your answer श्रीधर शत्रुघ्न आउ जे भी अच्छा कौन हम आंसर ट्राई टू आंसर गेस गोटे करो so this is announced by महाराष्ट्र है महाराष्ट्र अनाउंस करिछि तो जेमती हमर 5000 टंका माने 5000 5000 करके वर्ष को 10000 दिया होछि ना सुभद्रा योजना अंडर रे राइट तो एथिरे आंकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट केते दबो 1500 टंका दबो हैला काहा को दबो जो माने 21 रो जो माने 21 रो 65 एज ग्रुप रो थिबे हैला से मन को 1500 टंका लेखा दिया जिवो एंड गुटे कंडीशन हैला तांगर फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 2.5 लाख हैला फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 2.5 लाख तबे ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट विल बी गिवन 1500 हैला फॉर द वुमेन ओके सो आंसर विल बी महाराष्ट्र 34 क्वेश्चन देखो 34 which of the following statement is correct regarding the project Pari हमें पढ़ी पापा की परी नुह एटा प्रोजेक्ट परी इज रिलेटेड टू प्रोजेक्ट आर्ट ऑफ इंडिया और सॉरी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया पब्लिक आर्ट सहित एटा रिलेटेड हैला तो ता रिलेटेड किछरा स्टेटमेंट देछि कोटा करेक्ट पचरिछि 34 बी यस वी हैव रेड दिस ऑलरेडी इट सीक्स टू ब्रिंग फोर्थ पब्लिक आर्ट जो पब्लिक आर्ट अछि ताकू हमें एनकरेज करबा दैट ड्रॉस इंस्पिरेशन from the millennia of artistic heritage hala so this is not related to women barambar kochi project Pari is not related to women okay so B is the correct answer good next pradhan mantri Jeevan Yojana recently in the news it promotes healthy eating habits care of older people advanced biofuel or inclusive insurance kon hoba answer jani chhe ki nahi Jeevan Yojana bisare try to answer 35 oh welcome Shrikant 35 Shivani is saying C yes it is a advanced biofuel insurance hala तो ये योजना अंडर रे it promotes advanced biofuel insurance basically biofuel सहित एटा रिलेटेड तो biofuel हम किमती आउट के अधिका यूज करि परिबा हैला so that we can attract more investment in the biofuel sector and जो हमरो एग्रीकल्चर रेसिड्यू हैला इंडस्ट्रियल वेस्ट हैला ताकू हम केमती बायोफ्यूल रे कन्वर्ट करि परिबा एंड वी कैन आल्सो हेल्प फार्मर्स टू कन्वर्ट दैट एग्रीकल्चर वेस्ट इनटू बायोफ्यूल जदि फार्मर माने तांको एग्रीकल्चर वेस्ट को बायोफ्यूल रे कन्वर्ट करूछथि देन तांको पय किछि पर्टिकुलर इंसेंटिव भी प्रोवाइड करा जिवो बाय द गवर्नमेंट so this is all about your G1 program hello or G1 scheme it is mainly related to biofuel insurance hello yeah next 36 रो देखो and the clean plant program recently seen in the news is related to which of the following first statement कोची it is an initiative to combat air pollution clean plant program it is an initiative to combat air pollution बाकी तीनटा स्टेटमेंट तमरो एडी रहला
scheme for the transition towards renewable energy, or it is a scheme to improve horticulture sector, or none of the above. CPP critical एटा आउथरे देखे दोची अलग अलग रह जायची clean plant program हैला is related to what? Clean plant program हुआ related to कौन हम 36 रो बी हम ओके आउ किए ट्राई करिया चाहूँ so answer will be C actually है जो क्लीन प्लांट प्रोग्राम अच्छी रिन्यूएबल एनर्जी सहित केमती लिंक हम तुम भाव आम ये प्लांट विषय कहूँ है मे बी क्लीन एनर्जी जदि आम देखा से ये आम रिलेट कर बट बेसिकली इट इज रिलेटेड टू द हॉर्टिकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने है तो जो प्लांट्स माने माने किसी इश्यूज जदि अच्छी हॉर्टिकल्चर रे से केसेस रे आम हाई क्वालिटी वायरस फ्री प्लांट मटेरियल आम प्रोवाइड करि परिबा टू द फार्मर्स ओके एंड फार्मर ठू नहीं कि कंज्यूमर पर्यंत ये बेनिफिट समस्त को मिलिबा बिकॉज फ्रूट मार्केट रे हमर एक्सपोर्ट जिंदी बढ़िबो ता रिलेटेड एटा न्यूज़ रे थिला है सो क्लीन प्लांट प्रोग्राम इज अ स्कीम टू इंप्रूव द हॉर्टिकल्चर सेक्टर नॉट ये ट्रांजिशन टुवर्ड्स द रिन्यूएबल एनर्जी और फर्स्ट जो स्टेटमेंट थिला सेटा भी ठीक न सो सी विल बी द करेक्ट आंसर with reference to the national institutional ranking framework जाने थे बेटा NIRF ranking recently आशी तो ता regarding किछटा statement देची दीटा statement देची first statement is it was launched by the Ministry of Education to rank institutes of higher education in India एटा तो ठीक right second statement ठीक कि नहीं देखो कहला मते the institutions are ranked according to 5 broad categories each having the same weightage पांचटा कैटेगरी रे तांको रैंकिंग प्रोवाइड करा जाए एंड सबु कैटेगरी रो वेटेज सेम अछि इज दैट करेक्ट कोन कौन हम फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू है तो फर्स्ट स्टेटमेंट जदि राइट एटा तो भूल गला मैं एटा तो भूल गला है नेदर 1 और 2 तो भूल गला सेकंड स्टेटमेंट देखो कौन हम पांचटा सेक्टर रे और पांचटा ब्रॉड कैटेगरी ताको डिवाइड करा जाय नो डाउट कि तांगर टीचिंग पेडागोगी कोन तांगर ग्रेजुएशन आउटकम कोन कोन से माने सिखुछन्ते एंती पांचटा भाग रे डिवाइड करा जाय तो एथरे जदि से 100 आनला एथरे भी 100 आनला तो दी जन को वेटेज सेम रहबो कि दी जन को वेटेज सेम रहबो नै हला आर वेटेज अधिक थिबो आर वेटेज कम थिबो सो जो पांचटा ब्रॉड कैटेगरी रे डिवाइड करा जायछि इंस्टीट्यूशंस माने को अकॉर्ड माने केमते जो रैंकिंग दिया आइछि पांचटा ब्रॉड कैटेगरी रे सब कैटेगरी रो वेटेज समान न थाए हला सो स्टेटमेंट 2 हमरो भूल हे गेला बिकॉज़ सेम वेटेज न थाए डिफरेंट वेटेज थे हला सो ओनली 1 will be the correct answer clear next देखो with reference to the Pradhan Mantri Awas Yojana consider the following statement try to answer this the scheme will provide financial support to the middle class as well as impoverished urban families for building buying or renting reasonably priced urban homes the eligible income criteria for economic weaker section is 6 to 9 lakh which of these statements are correct एटा सब जानी थिबो प्रधानमंत्री आवास योजना विषय सब जानी थिबो तो दीटा स्टेटमेंट भितर कोटा करेक्ट हबो
आंसर करो। सी बोथ 1 and 2। अच्छा आउ किए ट्राई करिवो। What about Shivani, Shrikant, Shatrugna, Sridhar? What is your answer? Okay, so देखो first statement ठीक अछि हैला कि the scheme will provide financial support for the middle class as well as the urban family ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଘର କରି परिबे से सब जिंस କରି परिबे। so statement 1 is correct। statement 2 जदि हमें देखिबा economic weaker section मानको income criteria अछि 6 to 9 lakh। is it correct? economic weaker section रो income criteria कोन मन रखिबो तीनटा सेक्शन एथिरा अछि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हैला आ तमरा लो इनकम ग्रुप आ उड हैला तमरा एमआईजी मीडियम इनकम ग्रुप हैला। तो ए जो 6 to 9 लाख ता अछि सेरा कहारो सेरा होची मीडियम इनकम ग्रुप रो हैला 6 to 9 लाख तांगर इनकम रहिबा दरकार एनुअली। ईडब्ल्यूएस रो लेस देन 3 लाख हबा दरकार हैला। ईडब्ल्यूएस रो लेस देन 3 लाख हबा दरकार नॉट 6 to 9 लाख। तो ईडब्ल्यूएस रो लेस देन 3 लाख रहिबा दरकार एनुअल इनकम 3 to 6 लाख रहिबा दरकार एलआईजी मानकर इनकम आउ मिडिल तमरो इनकम ग्रुप रो रहिबा दरकार 6 to 9 लाख इनकम। सो ए स्टेटमेंट ता भूल हे गला। सो आंसर विल बी 1 ओनली। हमरो भी तमे एठी देखिथिबो भुवनेश्वर रे एलआईजी हाउसेस गुडा को अछि ना एचआईजी अछि। तो दैट मीन्स इनकम ग्रुप हिसाब रे सेटा डिवाइड हे छी। तो कहारो इनकम ग्रुप केते की तांकर देखा जिवो से हिसाब रे एलिजिबल कि नाही हमें डिटेक्ट करिबा। ओके नेक्स्ट विथ रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री जीवन योजना एबे जस्ट हमें पढिलु प्रधानमंत्री जीवन योजना। वेलकम देवाशीष। तो प्रधानमंत्री जीवन योजना रिगार्डिंग दीटा स्टेटमेंट देछि। It is implemented through a technical body under the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change. तार implementation period extend करा जायछि 2028 to 2029 पर्यंत। So which of these statement are correct? We have just now read about the Jeevan Yojana which is related to कौन? Related to biofuels। okay ने तो तार रिलेटेड आउ दीटा स्टेटमेंट एठी देछि। सो कोन हबो आंसर बी ओनली। नोबडी इज सेइंग बी ओनली। ओके दैट मींस 2 ओनली। आउ के किछ कहबो सो सिंस इट इज रिलेटेड टू बायोफ्यूल हैला तो एटा को मिनिस्ट्री अंडर रे आसीबो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैला पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री अंडर आसीबो नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सो एटा भूल हे गला। सेकंड इट इज राइट कि ताको एक्सटेंड करा जायछि 2028 29 पर्यंत ताको एक्सटेंड करा जायछि हैला। सो बी ओनली इज द करेक्ट आंसर। गुड नेक्स्ट which of the following statement is correct regarding the mission कर्मयोगी। कर्मयोगी मिशन कर्मयोगी मिशन कौन? it aims to create a future ready civil service with the right attitude skills and knowledge. It emphasizes on-site learning and traditional classroom training methods. It focuses exclusively on training and development of senior bureaucrats. So which of the statements are correct? Which of the statement are correct?
Please mention your question number and your answer. Hala. So nobody is saying one only. Yes, that is correct. So statement 1 correct. Future ready civil servants हमें create करिबा with proper right attitude, skills and knowledge. But traditional classroom method use न करिकी हमें modern methods use करिबा, online platforms use करिबा. हैला. Okay, Devasis, you are welcome for the free mock test 27 jota habaku jauchi. Good. So it aims to create the future ready civil service. It a thick but traditional training methods, classroom teaching methods no use kariki hame online teaching methods, advanced teaching methods use kara jibo sethire. And it is not only limited to senior bureaucrats, entry level bureaucrats hala माने एंट्री लेवल को नहीं कि सीनियर पर्यंत समस्त को प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जीवो. सो ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर, 2 and 3 इज रॉन्ग. हैला. गुड. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द Geo-Parsi scheme. Geo-Parsi scheme. What is this Geo-Parsi scheme? So it is launched in 2013-14 and it is a central sector scheme. The scheme has 3 components: medical assistance, advocacy, health of community. So which of the following statements are true? C question. Yes, correct. So this was launched in 2013-14. हैला. Geo-Parsi माने जो पार्सी मानकर पॉपुलेशन कमी जाउची ताकू प्रोटेक्ट करिया पे हैला, माने ताकू रिवर्स करिया पे, to reverse the declining population of the Parsi community. ए स्टेप टा निया है कि Geo-Parsi scheme करा जाय थिला. सो जो थरे तमर तीनटा कंपोनेंट्स रही छी and it is a central sector scheme. सो एटा तो ठीक अछि. तीनटा जो कंपोनेंट्स रही छी कि तांको मेडिकल असिस्टेंस दिया जिवो, एडवोकेसी दिया जिवो और हेल्थ ऑफ कम्युनिटी अंडर रे तांको प्रति तीनटा कंपोनेंट अंडर रे तांको हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड करिवा, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करिवा. सो मेडिकल असिस्टेंस माने मेडिकल केस किछि हला तांको मेडिकल ट्रीटमेंट पय सेतरे तांको फाइनेंशियली हेल्प करा जिवो हैला. आ अंडर द हेल्थ ऑफ कम्युनिटी माने एल्डरली केयर पय और छुआर केयर पय, चाइल्ड केयर पय भी सेति तांको असिस्टेंस प्रोवाइड करा जिवो. आ एडवोकेसी अंडर रे बहुत सारा प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम among the Parsi population करा जिवो, so that तांकर जो declining trend रोची Parsi community रो ताको हमें reverse करि परिबा. So both these two statements are correct. So answer will be both 1 and 2. हैला. Next, consider the following statements regarding the centrally sponsored schemes. So as I said, centrally sponsored scheme अलगा, central sector scheme अलगा. Centrally sponsored scheme रे कौन कौन हबो तमे आगो आंसर दियो, then I will tell you the reasons. So first statement कहूची, the schemes where the union government provide complete funding and the state governments are responsible only for implementation. हैला. Now the Bijal committee report of 1987 provides the definition of the CSS. So out of these two, which statement is correct? Tell me. 42 answer. कौन होगा? कहिछि मु बारंबार the difference between central sector scheme and the central sponsored scheme. 42 रो B, 42 रो 2 only. Yes. So central, you are correct. Nobody and Satyugna, you both are correct. So a scheme रे union government complete funding provide करिबो, एटा भूल हैला. बारंबार कहूची centrally sponsored scheme रे center maximum 90% provide करले, state 10% at least provide करिबो funding.
दी जन कंट्रीब्यूट करेंगे आ स्टेट इम्प्लीमेंट करिवो हैला तो कंप्लीट स्टेट माने सेंट्रल प्रोवाइड करिवो स्टेट किछि प्रोवाइड करिवनी तो एटा भूल हे गला हैला नेक्स्ट हैला बाइजल कमिटी रिपोर्ट 1987 अंडर ही माने तमरा एटा फॉर्म हितला प्रॉपर सीएसएस रो डेफिनेशन से देथिला सीएसएस यानी क्रिटिकली sorry centrally sponsored scheme हैला so only 2 will be the correct answer good 43 which of the following Indian states has recently announced the menstrual leave policy for working women हुआ menstrual leave policy दिया जिबो working women को state recently announce करछि सेटा $43 रो C yes am Odisha announce करिछि okay now tell me is Odisha the only state to do this कि menstrual leave policy 1 day रो menstrual leave policy हमें दे परियो women को during their menstruation period तो 1 day रो leave दे हबो हला and Odisha has recently announced but apart from Odisha is there any other state who have implemented such scheme or in Odisha is the first before Odisha 44 answer nobody we are talking about 43 now hello so before Odisha Bihar and Kerala मन रखिबो Bihar and Kerala it already implement करि सारी चंदी menstrual leave policy Odisha is the third state to do so है ना Odisha is the third state to do so next so nobody is saying 44 answer Muchi C let's see RISE accelerator program is primarily aimed at large multinational companies government agency startups and MSMEs non-profit organization yes so startup and MSMEs is the correct answer so basically जितकी भी स्टार्टअप अछंती फ्रॉम बोथ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू इंडिया इंडिया आउ ऑस्ट्रेलिया रे जदि किसी स्टार्टअप अछंती देन तांको हमें हेल्प करिबा टू राइज विल हेल्प देम टू राइज दैट इज व्हाई इट इज राइज एक्सेलरेटर प्रोग्राम दैट मींस वी विल हेल्प देम टू एक्सपैंड देयर ऑपरेशंस इन अदर कंट्रीज एज वेल है ना सो अंडर दिस प्रोग्राम एनी स्टार्टअप और MSMEs based in India or Australia से मन को हमें help करिबा so that they can expand their operations to other countries as well है ना so answer will be C 45 with reference to the Indian national mission for clean Ganga which of the following statements are correct it was registered as a society in 2011 under the Society Registration Act 1860 it has a two-tier management system comprising governing council and executive council which of the statements are correct कौन अब हुआ so first statement is correct it was registered as a society in 2011 and under the Society Registration Act 1860 है ना NMCG विषय मन रखिबो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट सेकंड स्टेटमेंट होची तार दीटा काउंसिल अछि गोटे गवर्नर काउंसिल एंड गोटे एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो दीटा जाक करेक्ट है एग्जीक्यूटिव कमिटी गोटे अछि गवर्नर काउंसिल अछि एंड दी जन को के हेड करे डायरेक्टर जनरल ऑफ NMCG है ना डायरेक्टर जनरल ऑफ
national mission for clean Ganga जे director general थिबो से governing council और executive committee को head करे हैला. So both these statements are correct, both 1 and 2 is correct हैला. So we'll take a break now and we'll start at ebe hela 43 हैला. So we'll start at 50. Okay, take a fresh shake aso nije jagaru utho and please be back by 12:50 because we have many questions to solve. Okay.
Okay, welcome back. जल्दी join हो जाओ, then we'll continue. Question number 46 sorry थिला और 45 sorry थिला 45 sorry थिला 46 okay 46 with reference to the open network for digital commerce ONDC in India, consider the following statements. It was launched in 2022 by the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, which is DPIIT, Ministry of Commerce, and it aims to provide equal opportunity to MSME to thrive in digital commerce and democratize e-commerce. So out of these two statements, which is correct? Which is correct? चलो आंसर करो. It was launched in 2022. Open Network for Digital Commerce 2022 रे launch हेइथिला कि yes, it was launched in 2022 by this DPIIT, Ministry of Commerce. So statement 1 is right. Statement 2 देखो, it aims to provide equal opportunity to MSME to thrive in digital commerce and democratize e-commerce. So एटा भी ठीक है. दीटा जाक स्टेटमेंट तमरा ठीक. जेमती कि माने एटा गोटे ओपन नेटवर्क क्रिएट करिवो फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जेमती हमर पेटीएम हे गला हैला, मीशो हे गला, जति कि भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अछंदी समस्त को गोटे स्ट्रीमलाइन करिके आनी परिवो थ्रू द ओएनडीसी प्लेटफॉर्म एंड देयर कैन बी exchange of goods and services, right? So both these statements are correct regarding the ONDC in India, open network for digital commerce. Clear? Next, with reference to the उड़ान उड़े देश का आम नागरिक initiative, consider the following statements. It is an initiative to improve the infrastructure and connectivity in India. So I think this is right, obviously, because एटा कोन उड़ान स्कीम तमे जानथिबो. अंडर द उड़ान स्कीम जो जगह रे कनेक्टिविटी पहुंच पर नथिला, खास करके हमरो एरोप्लेन माने थ्रू एयर कनेक्टिविटी जोठी नथिला से जगह रे कनेक्टिविटी हम इंट्रोड्यूस कलु हैला. तो दिस इज एन इनिशिएटिव टू इंप्रूव द कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया. सो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट. स्टेटमेंट 2 कोन कहूची देखिबा. स्टेटमेंट 2 कहूची कि द फर्स्ट उड़ान फ्लाइट was inaugurated in 2017 connecting Manipur to Delhi. So is this correct or not? एटा मते आंसर रे को. फर्स्ट उड़ान फ्लाइट हमरो लॉन्च हेतला 2017 रे, जे कि मणिपुर टू दिल्ली जाउथला से विमानटा. Is it correct or not? Is it correct or not? I need your answers. को मिनिस्ट्री अंडर एटा काम करे? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. बट जो फर्स्ट उड़ान रो फ्लाइट थिला, इट कनेक्टेड मणिपुर टू दिल्ली. इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? फर्स्ट फ्लाइट मन रखिबो, इट वाज शिमला टू दिल्ली. शिमला टू दिल्ली, नॉट मणिपुर टू दिल्ली हैला. तो एटा हमरो भूल हे गेला. सो आंसर विल बी 1 ओनली हैला. Next देखिबा, consider the following statements regarding the SLCR project. SLCR project regarding किछिटा statement देछि.
The SLCR project includes a decision support system for analyzing water dynamics within the Varuna River basin. The Varuna River, rejuvenated under the SLCR project, is a minor tributary of the Ganga River originating near Phulpur in Prayagraj. Out of these two statements, which are correct? Wow, why answers are not coming? These two statements are given. Okay, it includes a decision support system for analyzing the water dynamics within the Varuna River basin. And second statement is saying the Varuna River, which is rejuvenated under the SLCR project, it is a minor tributary of the Ganga River system. Which will be right? Are both the statements correct? So basically, what SLCR established kara haythila to rejuvenate the Varuna River. ହେଲା ବାରାଣସୀ ରେ वरुणा रिवर अच्छी ताको रिजुमिनेट करिया पे SLCR प्रोजेक्ट अना हैथिला एंड सेही प्रोजेक्ट अंडर रे obviously first statement हमर ठीक हैला to analyze the water dynamics within the Varuna river and that Varuna river is also a minor tributary of the Ganga river जोटा कि फुलपुर प्रयागराज रू ओरिजिनेट हुए. So both these statements are correct. हैला. So SLCR project मन रखिबो it was for the Varuna river रो rejuvenation. Okay, so both are correct, means answer will be option C. Subhadra scheme हम जानी छो बहुत popular, recently seen, is launched by which following, which of the state? Don't tell me that you don't know this. Subhadra river kahar scheme? kahar एबे भी जदि मु जदि कमेंट रे आंसर पाइबिनी कम ऑन कोन ब्रेक खेलार सब पळेल न कोन कोडे. सुभद्रा स्कीम कहार ए जानि सुनि के तुम माने कमेंट करनो. अरे आश्चर्य कथा. सुभद्रा स्कीम हमरो ओडिसा रो हां कि नहीं, तो जो थरे तमरो 50,000 will be provided but in 5 years हला 5 वर्ष रे 50,000 प्रोवाइड करा जिवो. every year 10,000 you will get in 2 installment. First installment you will get in Rakhi Purnima, second installment you will get in Women's Day March रे तमे एटा पाइबो. 5,000 करके वर्ष को 10,000 देबे, 5 वर्ष रे 50,000 दिया हबो हला. सो सुभद्रा योजना इज ओडिसा. पाकिस्तान नो की यस पाकिस्तान रो हितबो. क्लियर. नेक्स्ट PM-WANI scheme. PM-WANI scheme कोन? Recently seen in the news, aims to provide financial support to integrated bioethanol projects or to increase the internet connectivity or to bring tribal communities into the mainstream, or it is to empower women and promote gender parity. So PM-WANI scheme कहा से related? 50 रो आंसर कोन हो? 50 रो आंसर कोन हो? C. अच्छा वाईफाई सॉरी कहि देलु. वाणी रो फुल फॉर्म कोन? वाणी रो फुल फॉर्म जानि छ? वाणी रो फुल फॉर्म कोन? और इट इज अ गेस, simply a guess.
ओके यस वन एर फुल फॉर्म है वाईफाई एक्सेस नेटवर्क वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है वाईफाई नेटवर्क एक्सेस इंटरफेस है तो वाईफाई प्रोवाइड करा जिवो वाईफाई हॉटस्पॉट प्रोवाइड करा जिवो सो दैट वाईफाई माने इंटरनेट कनेक्टिविटी टाको हमें सब जगह रे पहुंचे पारिबा सो टू इंक्रीज द इंटरनेट कनेक्टिविटी दिस PM-WANI स्कीम इज रिलेटेड है वाणी रो फुल फॉर्म है वाईफाई नेटवर्क एक्सेस इंटरफेस which will so Wi-Fi hotspot करा जिवो so that low cost रे हमें इंटरनेट समस्त पाखे जमी कहूना टू द लास्ट माइल ऑफ द पीपल आम सर्विसेस पहुंचवा दरकार सो इंटरनेट सर्विसेस भी पहुंचवा दरकार समस्त को वेदर दे कैन बी फ्रॉम रूरल एरिया और फ्रॉम दे कैन बी फ्रॉम द अर्बन एरियाज है समस्त को इंटरनेट कनेक्टिविटी जमी मिलिबो सेटा हला एम ऑफ द PM-WANI स्कीम ओके नेक्स्ट 51 with reference to the Lakhpati Yojana, consider the following statements. It aims to uplift women in both rural and urban areas by providing them with skill development opportunity and financial support. It is jointly implemented by the Ministry of Rural Development and Ministry of Housing Affairs, Housing and Urban Affairs. Dita vitru kota thik habo. दीटा भितर कोड़ा ठीक हम लखपति दीदी योजना जानती वो कहार एटा लखपति दीदी सम्मेलन गोटे हेइथिला रिसेंटली कौन अब आंसर ओनली वन अच्छा anybody else would like to try देखो स्टेटमेंट 1 कौन कहला वुमेन को अपलिफ्ट करिया पे योजना हेची बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज रे इट्स नॉट फॉर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज इट इज ओनली फॉर रूरल एरिया अर्बन एरिया पे नुह अर्बन एरिया रो वुमेन पे नुह है लखपति दीदी योजना इट इज ओनली फॉर द रूरल वुमेन एंड तांको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करा जिवो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करा जिवो स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करा जिवो से सब करा जिवो ओनली फॉर द रूरल वुमेन नॉट फॉर द अर्बन एरियाज वुमेन है सो दिस इज नॉट करेक्ट देन इट इज जॉइंटली इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग रो एटे कोन रिलेशन आसीबो किछि नै मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स रो एटे किछि लेन देन नै हैला सो इट इज बेसिकली अंडर द दीन दयाल अंत्योदय योजना अंडर रे तमरा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो अछि ता अंडर रे तमरो लखपति दीदी स्कीम ता आसे सो इट इज मेनली ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट बट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एटी कोथरे भी लेन देन नै राइट सो दीटा जाको स्टेटमेंट हमरो भूल हे गला सो व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट नेदर 1 nor 2 जदि से खाली रूरल एरियाज लिखा था देन ठीक है 1 है बट बोथ रूरल एंड अर्बन पे नुह कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल क्वांटम मिशन the mission aims to establish a quantum communication network spanning 2000 kilometers with intercity quantum key distribution over 1000 kilometers है ना एटा हला फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट होची the mission is scheduled to run from 2023 to 2031 which of the following statements are correct which of the following statements are correct what is national quantum mission by the way quantum माने बहुत स्मॉल है ना आमे प्रीवियसली बिट्स रे सब कैलकुलेशन करूथुलु वर्तमान वी कैन यू नो फोकस ऑन क्यूबिट मेथड माने क्यूबिट्स यूज होछ हला आ खास करी कि क्वांटम मिशन अंडर आमे जदी देखिबा
क्वांटम कंप्यूटर्स डेवलप करिवार टार्गेट अछि जेमते सुपर कंप्यूटर्स डेवलप होची हला परम 8000 परम हला से सब जो सुपर कंप्यूटर्स अछंती सेठी हमें क्वांटम कंप्यूटर्स क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्निक्स आनी परिबा जो थरे के हमें क्यूबिट्स रे काम करिबा क्यूबिट माने आउरी छोटो बिट रो आउरी छोटो हला सो 50 टू 1000 क्यूबिट्स रे बना हिथिबो क्वांटम कंप्यूटर्स एंड फर्स्ट स्टेटमेंट जो कहूची स्पैनिंग 2000 किलोमीटर दैट इज राइट पूरा फर्स्ट स्टेटमेंट राइट मिशन रो एम हैला गोटे क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क हमें बनेबा हैला यूजिंग द क्वांटम कंप्यूटर्स स्पैनिंग 2000 किलोमीटर विथ इंटरसिटी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट राज्य गोटे कहि परिबो गोटे रिसेंटली न्यूज रे थिला गोटे स्टेट किछ गोटे करिछि रिगार्डिंग द क्वांटम मिशन फर्स्ट स्टेट टू डू समथिंग फॉर द क्वांटम मिशन क्वांटम वैली डिक्लेरेशन साइन करथिला चलो म कहि दोछि व्हिच स्टेट रिसेंटली साइंड द नेशनल क्वांटम वैली डिक्लेरेशन क्वांटम वैली डिक्लेरेशन किए साइन करथिला कहि परिबो अमरावती अमरावती रिसेंटली क्वांटम वैली डिक्लेरेशन साइन करथिला दैट मींस इट विल नाउ वर्क टू प्रोड्यूस दिस सुपर कंप्यूटर्स हैला क्वांटम कंप्यूटर्स टू बी स्पेसिफिक तो हमें क्वांटम टेक्नोलॉजी रे भी केमते आगु को बढ़ी परिबा दैट इज आवर ओनली टारगेट सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट द मिशन इज शेड्यूल्ड टू रन फ्रॉम 2023 टू 2031 दैट इज आल्सो करेक्ट हैला एंड को डिपार्टमेंट डेटा को इंप्लीमेंट करूची डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैला डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी implements it so both these statements are correct so both 1 and 2 is correct next हमें देखिबा with reference to the pradhan mantri jan dhan yojana consider the following statements jan dhan yojana related kichira statement is it try to answer this it is a financial inclusion initiative launched by the government in 2014 okay and there is a requirement of maintaining a minimum balance of 500 in these accounts कि 500 टंका मिनिमम रहिबा को पड़िबो ए अकाउंट रे सेमति किछि पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट अछि कि सेमति किछि रिक्वायरमेंट नहीं हैला सो यस इट वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इन 2014 जहा पाखरे भी अकाउंट्स नथिला तो सेमान को हम एनकरेज करलु कि गोटे बैंक अकाउंट निजर खोलंतु and we have reached our target के almost वर्तमान समस्त पाखरे निजर बैंक अकाउंट अछि राइट एंड सेथरे किछि हमर एम्ति 500 टंका रहिबो एम्ति किछि रिक्वायरमेंट माने रिक्वायरमेंट नाही हैला किछि न रहिले भी चलेबो सो ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर यस नेक्स्ट हमें देखिबा 54 which of the following Indian states recently reached the minimum age of marriage from 18 to 21 years 18 years marriage ru काढी कि 21 years minimum रहिबा कथा को स्टेट एटा रिसेंटली करिछि टेल मी is it Goa is it Himachal Pradesh is it Kerala or is it Assam कौन हम जानिछ नहीं which state 18 वर्ष रु 21 वर्ष करा हेछि हिमाचल प्रदेश मन रखिबो हैला तो 18 वर्ष आगरु थिला वर्तमान से करजी 21 इयर्स ओनली स्टेट टू डू सो वर्तमान जाई इंडिया रे केही भी स्टेट एमती किछि करना दे कि मिनिमम मैरिज तमर एज झियो मान को पय खास करके 18 टू 21 करिया पे हिमाचल प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट टू डू so that it can help in gender equality झियो मान करो फ्यूचर एजुकेशन हायर एजुकेशन ऊपर से माने जेमते फोकस करि परिबो रादर देन मैरिजेस एंड ऑल हैला तो सेहि में हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट recently which of the following Indian states has come up with a new social media policy encouraging influencers to promote its initiatives schemes and achievements with prize payments तमन को भितर के इन्फ्लुएंसर अछि कि
कि इन्फ्लुएंसर अच्छा सो तुमको गोटे गवर्नमेंट भलो प्राइस दबो टू प्रमोट दर इनिशिएटिव स्कीम्स जहाँ भी तांकर नुआ नुआ स्कीम आसुची गवर्नमेंट रो जहाँ जहाँ भी नुआ नुआ इनिशिएटिव आसुची हैला और गवर्नमेंट जहाँ भी अचीव करूची ताको से मान को प्रमोट करिया को पड़िबो हैला तो एमती गोटे नुआ सोशल मीडिया पॉलिसी को गवर्नमेंट आनी और को स्टेट आनी इज इट महाराष्ट्र इज इट वेस्ट बंगाल इज इट उत्तर प्रदेश और इज इट कर्नाटक 55 रो आंसर so answer will be UP yes Uttar Pradesh is the answer so Uttar Pradesh has come with the digital media policy हैला 2024 रे से आनी तो जो थरे की से इन्फ्लुएंसर्स मान को अप टू केते दे परबो जानछो अप टू 8 लाख इट विल गिव हैला 8 लाख पर मंथ से दे परिबो टू द इन्फ्लुएंसर टू प्रमोट स्कीम्स अचीवमेंट ए सब हैला गवर्नमेंट रो सब शोकेस करिया पेका बट ऑब्वियसली तमे भाबुछो एटा किछि रिटेलिएशन फेस करना थिबो सब जति के अपोजिंग पार्टी माने सब खुशी थिबे नो हैला तो जति भी अपोजिट पार्टी थिले एई मीडिया पॉलिसी अंडर माने अगेंस्ट थिले बिकॉज़ एनी हाउ जहाँ भी क्रिटिसिज्म थिबो ताको दबाई दबा को चेष्टा करि परिबो एमतिया जदि हमें ताको पैसा प्रलोभन देखैकी गोटे जिंस करैबा तो हैला तो 9 लाख हमें तुमको दबो बट तुमको आम सपोर्ट रे कहबार अछि हैला सो दैट इज नॉट राइट बट उत्तर प्रदेश has recently come up with this digital media policy 2024 जो थे कि up to 9 लाख दिया जीवो इन्फ्लुएंसर को से मानकर स्कीम इनिशिएटिव को प्रमोट करिया नेक्स्ट with reference to the agriculture infrastructure fund consider the following statements so कौन हबो It provides an interest subvention of 3% per annum on loans for post-harvest management infrastructure. Loans under the AIF are covered by a credit guarantee for amounts up to 2 crores under the Credit Guarantee Fund Trust for MSMEs or micro and small enterprises. And the total corpus of this is 1 lakh crore which is provided as grants by the central government. So out of these 3 statements, which statements do you think will be right? Tell me. Which statements can be right? So first statement is correct. Hala, कि it provides an interest subvention of 3% per annum on loan for post harvest management infrastructure. So harvesting परे infrastructure को manage करिया पे से 3% subsidy से दबो loan उपरे. Second statement है ला under this AIF which is the agriculture infrastructure fund ता under जो loan गुड़ा का provide करा जीवो है ला they are covered by a credit guarantee up to 2 crore under the credit guarantee fund trust for MSME. है तो second statement भी correct. So first and second statement correct. Third statement जो कही दूची कि the total corpus is 1 lakh crore that is also correct. But say 1 lakh crore is not provided as grant by the central government, rather that is provided in terms of loan. है ये जो 1 lakh crore टा एटा बैंक लोन देबो गवर्नमेंट डायरेक्टली एटा दबनी है ग्रांट हिसाब रे दबनी कौन भी बैंक और किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन बाबद तुमको दे पारे अप टू 1 लाख करोड़ फॉर द फार्मर्स है बट नॉट द माने एज ए ग्रांट हिसाब रे दिया जीवो नहीं है सो 1 and 2 इज करेक्ट बट 3 इज रॉन्ग सो आंसर कौन हम 1 and 2 ओनली नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रीसेट प्रोग्राम सो व्हाट इज दिस रीसेट प्रोग्राम It is exclusively designed for retired sports person aged between 20 and 50 years who have participated or received medals
in international events only, or the program offers different levels of training based on the educational qualification of the participants, and it includes both self-paced learning and ground training. So what is the correct option here? Is both the statement correct, or कोटा गोटे ठीक कोटा गोटे भूल, और दिटा जाक ठीक कि दिटा जाक भूल? कौन हम आंसर? ट्राई टू आंसर दिस रीसेट प्रोग्राम. सो जो रिटायर्ड पर्सन्स माने थिबे, स्पोर्ट पर्सन्स माने एज तांकर 20 to 50 इयर्स हेइथिबो हला, से मानकू कौन करा जिवो? कौन करा जिवो? से मानको ପାଇଁ ଏଟା डिजाइन करा ହେଇଛି रीसेट प्रोग्राम हला, कि तांको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जिवो, बट नॉट ओनली लिमिटेड टू इंटरनेशनल इवेंट्स ओनली. नेशनल इवेंट हो कि इंटरनेशनल इवेंट हो, डेटा जाकर जदि तमे पार्टिसिपेट करिछो, कोनोसी भी इवेंट रे कि पार्टिसिपेट करिछो और तमे मेडल्स रिसीव करिछो बोथ इन इंटरनेशनल एंड नेशनल, देन से केस रे तुमको ट्रेनिंग दिया जिवो बेस्ड ऑन योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करा जिवो हला. सो जेहेतु एठी लिखि दला इंटरनेशनल इवेंट्स ओनली, दैट इज व्हाई एटा भूल हे गला. सो ओनली 2 इज द correct answer. So answer will be B, only 2. Okay, next हमें देखिबा, which of the following statement is correct regarding the project Naman of the Indian Army? Naman of the Indian Army. So एपटे रहिला तमरो options. So it is a rescue operation. Naman विषय में डिस्कशन करूछु हला. What is this Naman program? It is a rescue operations in areas affected by the landslides. It is an operation in Gujarat worst affected areas. It is designed to provide dedicated support and services to the defense pensioner, or it is aimed to repatriate Indian citizen from Israel and Palestine through special chartered flights. So this is from the Indian Army or of the Indian Army. Naman program is of the Indian Army. तो कौन है इतना आंसर? कौन पे डिजाइन करा है इतना बस एटा? कौन भावुचो? इंडियन आर्मी रो अछि तो जो माने डिफेंस पेंशनर माने थिबे हला, तो तांको डेडिकेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करा जिवो हला, तांको फैमिली को सपोर्ट करा जिवो, सेटा होची नमन प्रोग्राम. सो सिंस इट इज फ्रॉम द इंडियन आर्मी, सेमानकर जो इट इज रिलेटेड टू डिफेंस हमें कहि परिबा. सो डिफेंस क्षेत्र रे जो माने पेंशनर पाउथिबे कि तांको फैमिली को सपोर्ट प्रोवाइड करा जिवो अंडर द नमन स्कीम. So answer कौन हबो? C हबो answer. It is not related to any flood operation or rescue operation or ए सब जिंस किछि नै. It is mainly for the dedicated for the defense pensioners. हला. C box with reference to the she box. She box कौन? किछरा statement देछि ता regarding. तो कोटा ठीक हबो? Try to answer. Try to answer. Answer दबार तुमरो जोश कम येलानी. How is the जोश? Huh? Try to answer. It is a centralized portal for registering and monitoring complaints of sexual harassment of women at the workplace. It only caters to the complaint from the government sector employees. It allows for real-time monitoring of complaints through a designated nodal officer. So out of this three statements, which are correct? Tell me. Out of these three statements, which statements are correct regarding she box? What is centralized portal data? Only 2. Okay, so can you tell me which particular statements are correct?
which statement is correct? माने only two माने कौन how many statements are correct बुझी पड़लो तो ये तीनटा statement रो केतेटा statement तमरो correct 1 and 3 second टा भूल the portal only caters to complaint from the government sector employee एटा भूल government sector हो किंबा private sector हो जेकोसी क्षेत्र रे और जेकोसी एम्प्लॉय भी एटा गोटे तमर कोन सेंट्रलाइज्ड पोर्टल बना हेची अंडर को मिनिस्ट्री अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अंडर रे गोटे सेंट्रलाइज्ड पोर्टल बना हेची जोथि कि जदी वर्क प्लेस रे किछि सेक्सुअल हेरासमेंट हैला देन सेठी से माने कंप्लेन करि परिबे हैला एंड दैट पोर्टल अलाउज फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ द कंप्लेंट थ्रू ए डेजिग्नेटेड नोडल ऑफिसर सो ए दीटा जाको ठीक बट ये जो कहला कि ओनली प्राइवेट माने ओनली गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय दैट इज नॉट करेक्ट गवर्नमेंट हो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज हो दी जन सेक्टर रो कंप्लेंट आनी दे परिबा हला सो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डिजिटल भारत निधि आई थिंक हमें डिस्कशन करी भी थिलु डिजिटल भारत निधि प्लेटफॉर्म केबे एस्टैब्लिश हेतिला 2023 रे एस्टैब्लिश हेची से कहूची अंडर द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडिंग टेलीकॉम स्कीम्स इन अंडर सर्व्ड रिमोट एंड रूरल एरियाज सेकंड स्टेटमेंट हला इट रिप्लेसेस द यूएसओएफ यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड which created under the Indian Telegraph Act of 1885. Third hela, the USOF was funded by a universal access levy, collected 10% of the adjusted gross revenue from the telecom licenses. Digital Bharat Nidhi bisara mein out a question bhi kari thilu. So try to answer this question. Out of this, a ko statement correct amano? Which statements are correct? कौन होगा so basically digital bharat nidhi it was established in 2023 हैला and से आपको replace करके बना जाइथिला यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड आ हमें एटा भी पढिलु कि 41,000 crore कलेक्ट करा हेतिला टैक्स बट सेठू ओनली 72% यूटिलाइज हे परथला टेलीकॉम कनेक्टिविटी क्षेत्र रे राइट तो सेति पई एटा एस्टैब्लिश करा हला कोटा तमरो डिजिटल भारत निधि एस्टैब्लिश करा गला थ्रू द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट बट थर्ड स्टेटमेंट से जो कहूची कि द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड वाज फंडेड बाय यूनिवर्सल एक्सेस लेवी which collected 10% of the adjusted gross revenue एटा भूल हे गला एटा मन रखिबो 10% से टैक्स कलेक्ट करू नथला बट 5% से कलेक्ट करथला हला it was collected at 5% of the adjusted gross revenue so a statement ता भूल हे गला otherwise statement 1 out 2 दीटा जाको ठीक regarding the dbn हला so 1 and 2 will be the answer बस एटा जदी 5% हे थांता देन एटा ठीक हे थांता ओके नेक्स्ट देयर आर नो इनकम क्राइटेरिया दीटा स्टेटमेंट देची हला वन एटा स्टेटमेंट 1 बेसिकली तमर 1 टा हटि जाईची एठी एंड एटा तमर स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 कोची 61 नंबर क्वेश्चन हमें आसीबा there are no income criteria for registering on the e-shram portal so there is a e-shram portal तमे जानथिबो e-shram portal गोटे अछि तो सेठी रजिस्टर करिया पे किछि इनकम दरकार नै इनकम क्राइटेरिया किछि नाही दारो सेकंड स्टेटमेंट कोची कि it has the provision of universal account number that remains unchanged for any worker हला सो दीटा स्टेटमेंट भितर कोटा ठीक हबा हमरो कोटा ठीक हबा
Come on, answer दियो. कोडे ठीक है ई श्रम पोर्टल जानिछ जो थरे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर मान को रजिस्टर करिया को कुहा जाय हैला अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर मान को रजिस्टर करिया को कुहा जाय एंड तांको गोटे यूएएन नंबर दिया जाए हैला यूएएन नंबर दिया जाए व्हिच इज ऑफ 12 डिजिट गोटे 12 डिजिट यूनिक नंबर तांको गोटे दिया जाए एंड जोटा तमरो चेंज हुए नी किछि को वर्कर पे राइट गोटे ई श्रम कार्ड भी दिया जाए एंड से ई श्रम कार्ड रे तमरो यूएएन नंबर थाए ओके सो स्टेटमेंट 2 करेक्ट स्टेटमेंट 1 को किछि इनकम क्राइटेरिया न थाए दैट इज आल्सो करेक्ट हैला सो इनकम क्राइटेरिया किछि न थाए बट मन रखिबो गोटे कंडीशन तार अछि कि तमे इनकम टैक्स दो नथबो देन ओनली यू कैन रजिस्टर इनकम क्राइटेरिया किछि नाही but you should not be paying income tax जदि तुम इनकम टैक्स पे करू छो then you are not eligible to register yourself in the e-shram portal तो e-shram portal रे जो गिग वर्कर्स थांती प्लेटफॉर्म वर्कर्स थांती फ्रीलांस वर्कर थांती और जो माने अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर रे काम करंती टू बी स्पेसिफिक से माने रजिस्टर करि परिबे तांको गुटे 12 डिजिट यूनिक कोड मिलिबो गुटे कार्ड थ्रू रे से कार्ड टाको हमें कहू e-shram कार्ड हैला गुटे कंडीशन के से माने इनकम टैक्स पे नथिबे इनकम टैक्स पे करू नथिबे सो बोथ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट नेक्स्ट हला 62 द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट अथॉरिटी IEPFA इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड ऑपरेट्स अंडर द व्हिच मिनिस्ट्री को मिनिस्ट्री अंडर से ऑपरेट करा जाए IEPFA मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स Ministry of Consumer Affairs or is it Ministry of Commerce and Industry? कौन हबो रे आंसर करो मु कोन खाली टा जगी छी तुमको भाबुछ आई नीड योर आंसर्स जहाँ भी तुमको गोटे इंट्यूशन लगुची से हिसाब रे भी आंसर करो इवन इफ यू डोंट नो मे बी मन के जाने मे बी यू कैन बी करेक्ट सो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड को मिनिस्ट्री अंडर आसे यस 62 इज बी वेरी गुड यस सो दिस इज बेसिकली yes तो जेते कि भी it comes under the ministry of corporate affairs तो जेते कि भी unclaimed dividends थिबो जहा माने dividends मिले जदि हमें गोटे particular stock किनु तो किछि तार stock रो हमको dividends मिले annually तो किछि मिली नहीं जदि dividends no it is not commerce it is ministry of corporate affairs हैला commerce and industry रो महा तो जो अनक्लेम्ड डिविडेंड्स थाए ताको केमते हमें यू नो पाई परिबा हला डिपॉजिट किछि रखिथिबा फाइन माने हमर फिक्स डिपॉजिट हला के किछि पर्टिकुलर हमें पॉलिसी कोडा को न तो ताको हमें केमती माने पाई परिबा हला इन्वेस्टर रिलेटेड अछि ना तमे एठु भाबो इन्वेस्टर रिलेटेड अछि इन्वेस्टर मानको एजुकेशन प्रोवाइड करा जेबो बुझिबेलो एंड से माने मैनेज करिवे कि कोठी कार अनक्लेम डिविडेंड्स मिले नी कि कोठी कार मैच्योर डिपॉजिट हे गेलानी बट से नै नी तार केते शेयर्स अछि तार अलगा फाइनेंशियल एसेट्स कोन अछि से सब जिंस एठी कवर हबो सो इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैला नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एग्रीश्योर फंड कोन इट इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव aimed at boosting investment in the agriculture sector. The fund provides financial assistance to farmer for sustainable agricultural practices and it is managed by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. What can be the correct option?
What can be the correct option for this? कौन हबो? देखो, it is a government initiative aimed at boosting investment in the agriculture sector. That is right. So agriculture sector रे आमे केमती infrastructure भलो infrastructure आने परिबा and तांको आमे केमती encourage करी परिबा to go towards the sustainability हला. तो sustainable agriculture practice से माने केमती maintain करिवे तापे proper funding भी तांको करा जिवो and it is obviously it is a investment in the agriculture sector. So दीटा statement हमरो ठीक हैला, but it is managed by the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. तुमको इटा ठीक लागू थाई पारे, but जेतु इटा funding ऊपरे कथाटा रहिला, तो this is managed by NABARD or any financial institution जे एग्रीकल्चर सहित रिलेट करथबो से माने आको मैनेज करंती. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एटा मैनेज करे नाही हैला. सो स्टेटमेंट 3 एटा भूल हे गला, बाकी 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर हैला. 64 जदि हमें देखिबा, विषाणु युद्ध अभ्यास इज a mock drill on pandemic preparedness. It is conducted under which mission? विषाणु अभ्यास गोटे मॉक ड्रिल है जमती आमर युद्ध अभ्यास हुए, मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुए आमर यूएसए सहित हुए युद्ध अभ्यास. सो सेमती विषाणु युद्ध अभ्यास गोटे होचे आमर पैंडेमिक वार ड्रिल, पैंडेमिक वार हिसाब रे कहि परिबा हमें. तो तापे गोटे मॉक ड्रिल करा जाए. सो किए करे सेटा को मिशन अंडर रे सेटा करा जाए? इज इट अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल एनिमल हेल्थ मिशन, National One Health Mission or the National Disaster Management Authority? कौन होगा आंसर? कौन होगा? नेशनल वन हेल्थ मिशन. सब बळे मन रखिबो पैंडेमिक रिलेटेड जदी किछि क्वेश्चन आसेला तो सेथिरे हमें नेशनल वन हेल्थ मिशन को रखिबा, नॉट नेशनल हेल्थ मिशन हैला. तो जे पैंडेमिक माने कोविड पैंडेमिक हेथिला, एबे तमे देखितबो रिसेंटली बहुत निपा वायरस रे डेथ होची हैला केरला रे. निपा वायरस व्हिच इज ए जूनोटिक डिजीज. जूनोटिक डिजीज माने जोड़ा तमरो एनिमल्स टू मेन को हुए, राइट, एनिमल्स टू ह्यूमन बीइंग को ट्रांसफर हुए. तो से केसेस रे हम केमती प्रिपेयर हे कि रहि परिबा सेति पे मॉक ड्रिल करा हबो एंड दैट इज कंडक्टेड अंडर द नेशनल वन हेल्थ मिशन हैला. सो दिस इज राइट. एंड रिसेंटली एटा हेइथिला गोटे जगह रे, जानि छ कोठी हेइथिला रिसेंटली ए मॉक ड्रिल हेइथिला, सेति पे एटा न्यूज़ रे अछि. तो रिसेंटली एटा हेइथिला अजमेर राजस्थान रे एटा मॉक ड्रिल हेइथिला. क्लियर? तो सेति पे एटा न्यूज़ रे थिला. ओके, नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द नेशनल टेस्ट हाउस. National Test House. It is India's largest multidisciplinary testing laboratory under the central government. It involves testing and quality assurance for the Jal Jeevan mission and metro projects. It is the only government agency providing drone certification in India. Which of the following statements are correct? Which of the following are correct? केबे एस्टैब्लिश हेइथिला एटा बाय द वे? 1912 रे एस्टैब्लिश हेइथिला हैला. तीनटा स्टेटमेंट भितरु कोटा ठीक को मत. It is India's largest multidisciplinary testing laboratory under the central government.
1 2 also 3 है तुमको लगुवा 1 and 2 okay 1 and 2 भी ठीक but please remember it is also the only government agency to provide drone certification in India है national test house 1912 रे सेटा inaugurate हेतिला and it is under the Ministry of Consumer Affairs है it is under the Ministry of Consumer Affairs. It is the largest multidisciplinary testing laboratory है it involves testing and quality assurance for Jal Jeevan mission जत्ते भी metro projects है सबुति पे सेठी testing available अच्छी and that is the only government agency to provide the drone certification in India. And recently good MOU signed ହେଇची between the National Test Agency ଆଉ तमरो BEE Bureau of Energy Efficiency भितर गोटे MOU भी sign ହେଇची recently to promote energy efficiency in India. So all these three statements are correct. तो मन रखिबो it is very important कि drone certification पाइबा पे it is the only government agency जे provide करे drone certification. Okay, with reference to smart cities mission आउ थरे smart city आसीगला. Which of the following statement is correct? It is an initiative of the Union Housing and Urban Affairs Ministry launched in 2015. It aims to promote cities that provide core infrastructure, clean and sustainable environment and give a decent quality of their life to their citizens. So, कौन हबो? Both 1 and 2 is correct. है 2015 रे लॉन्च हेतिला एई मिनिस्ट्री अंडर आछि सिटी मन को प्रमोट करे तांगर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करे पे क्लीन एनर्जी आड़ को काम करे पे क्लीन एनवायरनमेंट बनेबे सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बनेबे so that they can give a decent quality of life to their citizens. So both these statements are correct. Now can you tell me eta gote smart cities mission, is it a centrally sponsored mission or it is a central sector scheme mission coach? Is it a centrally sponsored scheme or is it a central sector scheme? कौन क्लीन ये जो स्मार्ट सिटीज मिशन हमरो what? Is it a central sponsored scheme or is it a central sector scheme? What of answer? It is a centrally sponsored scheme. Hala, smart cities mission is a centrally sponsored scheme. So please remember. So both 1 and 2 is the correct answer. Okay, yes. Next, consider the following statement regarding the graphene innovation ecosystem in India. Graphene innovation ecosystem in India related kichita statements each. So first statement hella, it was launched in 2023 to support the development of graphene technology. The Indian Innovation Center for Graphene IICG will launch हेतिला by the Ministry of Electronics and Telecommunication Electronics and Information Technology in Kerala. And third hella, Digital University Kerala is responsible for implementing the GAP initiative. So GAP माने कौन graphene innovation ecosystem है so gap माने है तमरो graphene applied program. So एटा 2023 रे लॉन्च हेतिला graphene technology को improve करिया पई ताकू Ministry of Electronics and IT launch करिथिले and Digital University Kerala is माने responsible for implementing this gap. Which of the statements are correct? Which of the statements are correct? Options देख दो. Yes, all these statements are correct. 1, 2, 3. All the statements are correct regarding the graphene innovation
ecosystem. Okay, so 1, 2, 3 all are correct. 68 number question देखो, स्वच्छ भारत मिशन regarding किछिटा statements देछि. स्वच्छ भारत मिशन कौन आंसर होगा? It was launched in 2014 with the goal of achieving universal sanitation coverage by 2019. The urban component of the mission is implemented by the Ministry of Urban Development and the rural component is implemented by the Ministry of Drinking Water and Sanitation. दीटा statement देछि. So कौन ठीक होगा? कौन ठीक होगा? Yes, it was launched in 2014. गोटे टार्गेट नहीं की जाइथिले कि यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज से माने by 2019 से गोल टाको कंप्लीट करि देबे on the occasion of 150th anniversary of Mahatma Gandhi. हला 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. आ सेकंड पॉइंट भी करेक्ट. तार दीटा कंपोनेंट अछि, अर्बन रूरल. अर्बन ये रे मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट विल इंप्लीमेंट दिस. आ तमरा रूरल सेक्टर रे मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन will be implementing this. हला. So both the statements are correct. Basically हमरो open defecation free बनेबा ये सब करबा ये सब दायित्व हमरो रूरल सेक्टर रे थाए. हला. Next, vision next. Consider the following statements reference to vision next. Vision next regarding data statements देछि. It is funded by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship under the Research and Development Scheme. It is India's first ever barambar mu kuhe India ro kichi first hochi, that is important. So it is India's first ever initiative that combines AI and EI to generate fashion trend insights and forecast. So which of these statements are correct? So co department under रे सेटा आसुची और किए ताको फंड करूची and statement 2 एटा देछि. So कोटा ठीक हबो? कोटा ठीक हबो? Only one? Okay. आउ किए किछि कहबो? Okay, so let us discuss. Mana rakhiba, it is under the Ministry of Textile. Vision next mana rakhiba, Ministry of Textile, but not under this ministry. Hela? And statement 2 is 100% correct. Ministry of Textile under the asuchi and नुआ fashion trend insight को generate करिया पे AI और EI को integrate कराइछि. AI माने artificial intelligence जानी थी वो, EI माने हला हमरो emotional intelligence. हला दी जन को integrate करेगी आमे केमती fashion trend को insight को generate करि परिबा. And तमरो अछि कोन fashion development जो institute गुडा अछि, National Institute of Fashion Technology, NIFT. So NIFT Chennai आउ गोटे NIFT मन रखिबो, NIFT Chennai and NIFT Delhi. दी जन combinedly they have worked for it. NIFT Delhi. तो से माने एमती गोटे किछि बनै चंती जे कि AI आ EI को इंटीग्रेट करिकि नुआ फैशन ट्रेंड्स हमगु से दे परिबो. हैला. एंड वर्तमान तमरो एटा सेंट्रलाइज हेकी रहिछि, गोटे लैब हिसाब रे रहिछि चेन्नई रे. ओके. सो फर्स्ट तो भूल हे गेला बिकॉज़ इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड सेति पे एटी जदी टेक्सटाइल लिखि थांता एटा हमको इजी हे जेथांदा ओटे. ए जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट लिखि देला सेटा हमको कंफ्यूजन हे गेला. हैला. सो स्टेटमेंट 2 इज द
correct answer. Okay, next. Which among the following schemes are subsumed under Samagra Shiksha scheme? Samagra Shiksha scheme under कोकुटा subsume कराई 70 रो आंसर कौन हबो? समग्र शिक्षा स्कीम कौन हम आंसर? 1 2 एंड 3 चारटा जाक ता अंडर ही आम रखिबा कि आउ किछि एपट सेपट हबो कौन भाबुछ? 1 2 3 4 ऑल समग्र शिक्षा मत टिके देख मिड डे मील ता अंडर रहइबो ना का अंडर रहइबो जेतल मु कहूची समग्र शिक्षा स्कीम नो डाउट मिड डे मील हमरो प्रोवाइड करा जाउ छला बट मिड डे मील कहा अंडर रे अछि? इज इट अंडर द सर्व शिक्षा अभियान? पीएम पोषण अछि ना गोटे पीएम पोषण अभियान पीएम पोषण अभियान अछि ना ता अंडर रे हमर आसीबो मिड डे मील स्कीम यस बाकी तीनटा जो सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान टीचर एजुकेशन ए तीनटा हमर आसी परिबो समग्र शिक्षा अभियान रे हला सो ओनली 1 2 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर माने टीचर मन को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करा जिवो अर्ली चाइल्डहुड केयर करा जिवो फाउंडेशनल लिटरेसी केमते तांग पाखरे रहउची कि नै फाउंडेशनल न्यूमरेसी रहउची कि नै रिसेंटली हमर गोटे परख सर्वे हेतला जोट कि जणा पड़थिला ए स्टैंडर्ड रो पिला कोन कोन पढ़ी पारछि से तार प्रीवियस क्लास रो जिंस गुडा को पढ़ी पारछि कि नै लिखि पारछि कि नै से केते नंबर टेबल्स जानि छि ए सब जिंस हमरो रहइला से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अंडर रे तो ये सब जिंस सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान टीचर एजुकेशन एटा सब हमरो रहइबो समग्र शिक्षा रे बट मिड डे मील स्कीम नो डाउट स्कूल मान को एटा प्रोवाइड होउछि बट दैट इज अंडर द पीएम पोषण not under this है so 1 2 3 is the correct answer. Consider the following statements with reference to the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar. Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar. So the awardees are given to children or the awards are given to children in the age group 5 to 12 years for their exceptional abilities and outstanding achievements and each awardee is given a medal, a certificate, a gote citation booklet भी दिया जाए. So which will be correct? Sorry. Which will be correct? Both 1 and 2. एज टा हम आउथरे देखिबा 5 to 12 इयर्स एज अछि कि तारो प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार रो और आउट के अधिक एज भी थाई पारे आउट के अधिक एज भी थाई पारे ना किते एज टू बी स्पेसिफिक किते एज तो जदि हमें देखिबा 5 to 18 इयर्स आरो एज ब्रैकेट हैला 5 to 18 इयर्स भितरे से माने रहिबे एंड जे कोनो से भी फील्ड रे हैला जे कोनो से फील्ड रे हो से माने आर्ट एंड कल्चर फील्ड रे हो ब्रेवरी फील्ड रे हो एजुकेशन फील्ड रे हो सोशल सर्विस रे साइंस एंड टेक्नोलॉजी रे सब फील्ड रे हमें तांको गोटे सर्टिफिकेट जोथरे से माने एक्सेल करेबे सेथरे तांको सर्टिफिकेट भी दिया जिवो मेडल भी दिया जिवो साइटेशन बुकलेट भी दिया जिवो सो ओनली गोटे प्रॉब्लम एट हे गेला 5 to 12 इयर्स लिखि देला सो नाउ ओनली स्टेटमेंट 2 ही हमरो ठीक हे जाउची स्टेटमेंट 1 टा भूल हे जाउची हेलो 5 to 16 की इज इट
मे भी मो भूल भी होता है पारे केते एज मु टिके देखि दउची ओथरे ना इट इज 5 to 18 years जुलाई रे चेंज हेची एटा हैला it is 5 to 18 years okay 5 to 18 years of. Next, consider the following statement with reference to the district agrometeorology units damus ta related kichita statement dechi hala so tell me which one is correct out of the given statements. First statement hala they were established by meteorological department okay to provide local agricultural advisories using weather data. Our second statement hela they were set up under the Paramparagat Krishi Vikas Yojana in 2018. So which of these statements are correct regarding to the district agro meteorological units? Tell me. DMU or DAMU regarding data statement dechi. कौन हम आंसर first statement is right they were established by the India Meteorological Department to provide local agricultural advisories using weather data first right second it was set up under the Paramparagat Krishi Vikas Yojana that is not correct हैला तो से को योजना अंडर रे करा जायतिला को योजना अंडर करा जायतिला they were set up under the ग्रामीण कृषि मौसम सेवा हैला ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना. So since we are discussing about meteorology हैला तो वेदर विषय में कथा होचु so it is related to the ग्रामीण कृषि मौसम सेवा. So basically सेठी farmers मान को help मिलेबो so that से मान को proper data मिलेबो weather related information ताको मिलेबो early warning मिलेबो ये सब जिनसो ताको मिलेबो हैला okay. Next देखिबा हमें consider the following statements with reference to the प्रधान मंत्री किसान मंदन योजना PM-KMY प्रधानमंत्री किसान मंदन योजना रिगार्डिंग किचरा स्टेटमेंट देछि. So first statement हला it is a voluntary and contributory pension scheme. Second हला eligible small and marginal farmers are given fixed monthly pension of 5,000 after attaining the age of 65 and which of these statements are correct? Data statements देछि data statements to quote it correct. आंसर करो. So basically तांको 5,000 पेंशन तो मिलेबनी बट तांको 3,000 पेंशन मिलेबो आफ्टर दे रीच 60 इयर्स आफ्टर दे अटेन 60 इयर्स हला 3,000 तांको पेंशन मिलेबो 60 इयर परे एंड तांके भी किछि गोटे कंट्रीब्यूट करिवे डू यू नो केते फार्मर माने केते कंट्रीब्यूट करिवे they can contribute from 55 to 200 rupees हला 200 rupees per month से माने contribute करिवे. So this is a voluntary and contribution pension scheme. So farmer भी contribute करिवे and at the age of 60 तांको 3,000 लाखा monthly pension मिलेबो. तो गवर्नमेंट रो भी रहला पैसा फार्मर रो भी रहला पैसा. So आंसर कोन हेगा कि it is a voluntary and contribution pension scheme. एटा भूले गेला. So one only is the correct answer.
Okay. With reference to the Pradhan Mantri Kisan Mandan Yojana, consider the following statements. So, recently I made a question for you. Same jinsa. It is a social security scheme launched in 2019. Eligible small and marginal farmers are given a fixed monthly scheme of 3,000 after attaining the age of 60 years. Ebe just a minute kolu. Kon hab answer? Both the statements are correct. It is a social security scheme 2019 रे launch ହେଇଥିଲା and 3000 ତାଙ୍କୁ pension ମିଳିବ 60 ବର୍ଷ ପରେ till then ସେମାନେ contribute କରିବେ 55 ରୁ 200 rupees पर्यंत ସେମାନେ contribute voluntarily contribute କରିପାରିବେ ହେଲା so both 1 and 2 will be the correct answer. Yes. Fifth hela or 75th ro question hela with reference to the Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin hela तो Gramin alga urban alga hame already katha hithilu. So which of the following statement is correct? It is launched by the Ministry of Rural Development. The beneficiaries are provided financial assistance of 5 lakh in plain areas and 2.3 lakh in hilly states. Kota thik hab. Already starting रे गोटे question हमें करिथिलु आ regarding. स्टार्टिंग रे गोटे क्वेश्चन करथिलु मु जोटी कहिथिली कि तांको प्लेन एरियास रे 1.2 लाख दिया जिवो हिली एरियास रे तांको 1.3 लाख दिया जिवो आ एक्स्ट्रा तांको गोटे 10,000 दिया जिवो टॉयलेट कंस्ट्रक्शन पई हला तो ए जो नंबर्स गुडा को एठी लिखिछि दैट इज रॉन्ग इट इज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट दैट इज राइट हला किंतु तांको प्लेन एरियास रे 1.2 लाख मिलेबो हिली एरियास रे 1.3 लाख मिलेबो सो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग one only is the correct answer. Okay, so 75 rahegala eta I think. So I think I should end here and kali bhi achi part 2. So 75 question aji discussion kolu. Let's see kali ame ketara question now discussion kari pariba. Okay, I hope you enjoyed the class. If yes, comment karibo video re hela and please be active tomorrow kali bhi asibo class re kali bhi emti ame bahut sara questions discussion kariba. I hope this was helpful for you hela. I hope you like this. Comment କହିଲେ ତ ମୁଁ ଜାଣିବି otherwise how can I interact with you all. ଭଲ ଲାଗିଲା ଖରାପ ଲାଗିଲା କଣ କିଛି ରିଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୁ ନଉଛି whatever things that is coming in your mind you can just type it down so that କାଲି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କିଛି ଭୁଲ ଆମେ ରିପିଟ୍ କରିବାନି. All good? Did you like the video or did you like the enjoy the class basically? कौन किसी कमेंट नहीं? So that means you did not like the class. Yes, thank you. Sukhoi and please change your name. How will I माने मु तुमको सुखोई केमती डाकिबी? It doesn't sound good. Please change your name at least during the class. Okay, ठीक अछि. Thank you for your patience. 3 घंटा क्लास देखिया पे. We'll meet tomorrow exactly at 11 AM. और बाकी टा questions हमें discussion करिवा खाली. Okay, thank you everyone. Thank you. नेटवर्क प्रॉब्लम माने मो आडू थिला कि नेटवर्क प्रॉब्लम किछि आम आडू थिला कि किछि प्रॉब्लम सो दैट आम एटा चेक करिबा. आई डोंट थिंक सो सेमती किछि प्रॉब्लम हेतिबो बाकी माने इफ यू कैन कंफर्म.
ठीक अच्छे, विल मीट टुमारो। ओके, थैंक यू।